Assalamu alaikum, good afternoon. We are back with match number 18 of Red Premier League Season 2. We are two teams playing against each other. It is Athwas India 11 and Sopore Stallions. Toss won by Athwas India 11 and they decided to bat first against the likes of Sopore Stallions. The two openers in the middle, there is Qazi Junaid and he's got Dikshant Kundal. Mujtaba Yusuf, as usual, he's going to open the attack for Sopore Stallions. Captain is happy to continue with Mujtaba Yusuf, who bowled terrific liners yesterday, picking up a couple of wickets against the likes of Royal Goodwill. But that was a loop-sided affair in the end. It was a one-sided clash. Yeah, they lost 6 wickets, but they shown the dominance, going on to climb the victory by 4 wickets in the end. Mujtaba has got the ball in his hand. Little adjustment is being done there. We'll have to wait and watch. Dikshant is getting ready. He's warming up a bit. If we talk of Arbaz Nazir, he gets a game in today's match. He comes in place of Fayaz Sarwar. On the other side, if we talk of Athwas India 11, they have made 4 changes for today's match. They brought in 4 new names in their lineup. It's none for none. Straight away, Mujtaba is warming up a bit. There is a slip in place. There is a point, cover point, extra cover and mid-off. Onto the onside, there is mid-on in place, short mid-wicket. And a man at backward up scare. Sun is shining brightly over the centre. Little breeze at the moment here. But it's hot and humid climate. Mujtaba setting his field. Is he going to bowl to his field? We shall come to know with the passage of time. As Mujtaba is getting ready. It's going to be ball number 1. That bright sunshine, hot and humid climate is going to affect both the teams. But look at their dedication and determination. And this is the Athwas India dugout. There is a Nasir Lone, Irfan ul Haq. And brought in 4 new boys in the lineup for today's game. As we watch Mujtaba again. Mujtaba, who bowled terrific lines and lengths yesterday. Can he replicate in today's game? Is he going to be a force to reckon? That remains to be seen. Short pause in play. Dikshant is going to be on strike. Let me take you through. Parvez Rasool, the captain. Ankit Narwal, Asif Ramzan, Asif Rasool, Azim Qazi, Mujtaba Yusuf, Awais Baba. First ball. As Mujtaba goes and bowls wide of the off. It's a big wide. He starts off with a wide. Even yesterday, he started his pressure with a wide delivery. And today, and I was just talking about that, can he replicate? When it comes to the extra ball, he has done that in style and bowled that wide delivery. But this time around, it's wide of the off. Yesterday, that was down the leg side. He's got the new ball in his hand. Is he going to make the ball move outwards? Will he be bringing the ball back into the right-hander? That remains to be seen. Well, the new ball will surely move for a couple of overs. It's afternoon game here at Bakshi Stadium. Goes again. That's a quality shot. Beautifully driven. There is no need to run for those 4 of them. A round of applause for Dikshant Kundal. Draws him forward and he puts that one away. A quality shot of the bat of Dikshant Kundal. He's off the mark. He opened his account. And this is the replay that depicts the class of batter. So nice. Elegance. And he didn't move an inch there. He knew that this one is going to run down to the boundary. It does. Mujtaba conceded a boundary on that occasion with a slip in place. That one inside edge. He's going down to the backward of scare. He's going to get 1 here. 6 for none. Dikshant on to 5. Athwas India 11. They are 6 without lost. Batting first after winning that important toss. अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक स्वागत आप सभी का जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और रेड एफएम जेके के माध्यम से पहला मुकाबला आज के दिन का कुल मिलाकर जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 वर्ष प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल अथवास विद कॉन्फिडेंस। 18वां मुकाबला काजी जुनैद और दीक्षांत कुंडल अथवास इंडिया 11 के लिए शुरुआत कर चुके हैं। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया सोपोर स्टैलियंस के बाद मुजतबा यूसुफ 6 रन बगैर नुकसान के बाएं हाथ से और सामने काजी जुनैद जो के बाएं हाथ के बल्लेबाज थे।
ठीक गेंद के पीछे आकर के ड्राइव किया पर सीधे फील्डर के पास, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। तेज धूप, अच्छा तापमान, एक बेहतरीन क्रिकेट। और इस पूल ए की अगर बात करें तो सोपोर स्टैलियंस का ये तीसरा मुकाबला और अथवास इंडिया 11 का ये आखिरी लीग मुकाबला है अपने पूल में, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में 2 जीत 1 हार के साथ वो 4 अंक लेकर के इस पूल में बने हुए। और वहीं पे सोपोर स्टैलियंस ने 2 मुकाबले खेले, 1 जीत 1 हार, ये उनका तीसरा मुकाबला। 6 बगैर नुकसान के मुजतबा यूसुफ सोपोर स्टैलियंस की ओर से, एक बेहतरीन तेज गेंदबाज, अच्छी खासी गति उनके पास, उस रफ्तार का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अथवास के लिए देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी वो अथवास के विरुद्ध करेंगे। बेहतर स्ट्रोक, खूबसूरती के साथ गैप में गई है गेंद और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ यहाँ पर काजी जुनैद को और खाता खुलता हुआ काजी जुनैद का। 4 पर पहुंच गए काजी जुनैद। मुजतबा यूसुफ के विरुद्ध बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक और 4 रन जरूर मिले, हालांकि फील्डर काफी दूर थे। प्रयास उनका था पर गेंद की गति काफी तेज थी और ऐसे में 4 रन मिलते हुए काजी जुनैद को। खाता खुला काजी जुनैद का। दीक्षांत कुंडल और काजी जुनैद 2 अनुभवी खिलाड़ी अथवा इंडिया के लिए समय बीच मैदान में प्रारंभ करने आए हैं। 10 दोहरे अंकों में रन संख्या बगैर नुकसान के। काजी जुनैद सामने, मुजतबा यूसुफ। एक बार फिर बेहतर गेंद थी, खेला जरूर पर सीधे फील्डर के पास और आसिफ रसूल ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। आखिरी गेंद का आना बाकी, पहला ओवर पारी का। सुपर स्टैलियंस की टीम अवश्य जीत की तलाश में, क्योंकि एक मुकाबला जीते हैं, एक में हार का सामना करना पड़ा और रॉयल गुडविल से वो पिछला मुकाबला हारे और उसके बाद एक मुकाबला इस मुकाबले के बाद उनका बचा है जो कल शाम खेला जाएगा सोपोर स्टैलियन और सुल्तान वारियर्स बारामूला के बीच। 10 बगैर नुकसान के। इस बार फिर सीधे वहां खिलाड़ी के पास उनने गेंद को फील्ड कर लिया मिड ऑफ फील्ड से। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर समाप्त। 10 रन आए पहले ओवर से मुजतबा यूसुफ के। काजी जुनैद 4, दीक्षांत कुंडल 5। एक बेहतर शुरुआत चाहिए, एक ठोस आधारशिला की आवश्यकता यहाँ पे अथवास इंडिया के प्रारंभिक बल्लेबाजों को। और सोपोर स्टैलियन शुरुआत में एक विकेट चाहेगी। दूसरे छोर से देखना होगा, आसिफ रसूल का इस्तेमाल संभवतः किया जाएगा गेंदबाजी में मुजतबा यूसुफ के साथ। अनुभव की कमी नहीं है आसिफ रसूल के पास, पर यहाँ एक सटीक लाइनो लाइन के साथ गेंदबाजी करनी इस विकेट पे एक चुनौती जरूर उनके सामने है। दीक्षांत कुंडल जो कि अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतर एक टैलेंटेड खिलाड़ी। सोपोर स्टैलियंस के लिए गेंदबाजी का दायित्व तो आसिफ रसूल के पास। दूसरे की शुरुआत, पहले ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है। 10 रन आए पहले ओवर में। Asip to operate from Northern Pavilion, and this is going to be the second over of inning number 1. He's got plenty of fielders on offside. Cut away nicely down to the backward, a point boundary for 4. Straight away boundary coming for Dikshant Kundal, showing that aggression as Dikshant cuts that one nicely and gets 4 for that. Look at that shot. Unable to keep it down, but it races away, it races past. These are going to be handy runs for Dikshant. It's 14 for none. Good start here. Just the beginning, and they're 14 in no time. Little adjustment in the field on offside as Asif goes again wide up the off, and this time there is protection, won't be run there. I think the fielder has hurt himself for a while, but that was again width on offer. He's trying to keep it away from the batter's arc, and Dikshant has that ability. He's going to latch on everything. He was trying to launch it away, but find his man in place. Con pierces the gap. There is a change in the field. Someone else is asked to stay there in place of Arbaz. 14 for none. Athwas India 11, they're batting first. In the meantime, Asip again. Soft hand this time, and find us that long gone area. One more run taken. 15 without loss. Dikshant on to 10 of 5 balls.
And Dikshant is going to get better with the passage of time in today's game, as he has found that meaty part of the blade. But we have seen two boundaries coming. The first one, that was elegance. The next one, bit aerial, but again in control. Getting the second boundary. 15 on the board. Asif Rasool is making adjustment again. He has got one man at short, fine area. One more added to the offside. Fold the offside cordon. Baba, then Zishan, Zahoor and Mujtaba. Look, Junaid is finding that this time round it's easy. Talking about he's finding that meaty part of the blade. He's able to middle it. And that's the positive sign for Athwas India 11 in today's game. He was struggling over the past couple of days. But today all of a sudden that he's middling the ball. That's the positive sign. And that is the improvement shown by the left-hander. One more run taken. Plays it to mid-on area. And these things are going to be good for Athwas. Once they enter that Super 8 stage, you can't make any adjustment in the Super 8s. You have to improve prior to that. Because the next stage, you have just a game, one game, and it's going to be that knockout game. You win, you're through. You lose, you have to go back. That one, it was pretty close and worked away nicely. Little bit back and cross the line there. No problem at all. It is 16 without any wicket, as we are done with over number 2 here. Athwas India 11 batting first, bringing in 4 changes. They got 4 changes in team in today's game. Brought in 4 young lads in place of other 4. And that will help the management to cope up with the best possible 11 for the next game. Because there is just a game. It's going to be changing the bowling. Now captain will operate. Parvez Rasool has decided to operate within the power play. That is going to be interesting. He's going to bowl from Southern Pavilion end. Captain has got the ball in his hand. A slip for captain there. The 2 men, Qazi and Dikshant. What they will do against the likes of Parvez. Going to be interesting and intriguing at times. Here is Parvez. For the first time. Dig out nicely. That was a well-directed one. He does well on that occasion. Keeps it away. No problem with that one. Qazi Junaid will have to keep his cool there. You need to continue with that calmness. That's a good looking shot. But unable to find the gap. Sumit Kumar is the man who's there to stop it and prevent it. This is 3rd over. Just the beginning of match number 18. Androy comes into play. Find a mid-on in place. Not 4 runs. Well, these dots are going to be crucial here with the new ball, that too within the power play. Restrictions are on and Parvez chipping in with dot deliveries. What Junaid is going to do now? Oh, that's a big shot. And that's gone all the way on to the rooftop. And that was coming. He needed that kind of a shot there to boost his confidence. He decided to sweep that one. He goes aerial and finds that rooftop with ease. Look at that shot again. In the zone. Isn't easy to take him on, but that's a quality of a shot. Qazi Junaid belted it. 22 for Nana. This time wraps him on pad. And little how's that from bowler and others. Equally spotted, but there was nothing. It was going down the leg. Drifting down the leg side, so no problem at all. Qazi survives 11 of 9. This is 3rd over. And Parvez in his very first over. That one, soft hands. Gently played. Good shot there. He's trying to apply himself here. Done well on that occasion. We're done with the 3rd one here. After the completion of 3 overs, Athwas are 23 for none. Steady start, but a prolific one. They are unhurt. It's 23 already onto the board, and we saw that 6 coming against the likes of Parvez Rasool. अच्छा ओवर कटा
3 के बाद 23। चौथे ओवर की शुरुआत और पहली गेंद और अच्छा स्ट्रोक सामने की ओर, कोई मौका नहीं और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ यहाँ पर काजी जुनैद को, और काजी जुनैद इस चौके के साथ ही अपनी व्यक्तिगत रन संख्या में बढ़ोतरी करते हुए, वो बेहतरीन स्ट्रोक था सामने की ओर। आसिफ रसूल के विरुद्ध लॉन्ग ऑन पे चौका मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज को 4 ओवर खाते में, और 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि। 4 रनों के साथ रन संख्या 27। 3.1 के बाद स्वागत पहली गेंद पर आसिफ रसूल। अगली गेंद इस बार ऑन साइड में हल्के हाथों के साथ उसको खेला और बड़े आत्मविश्वास के साथ ये रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में छोड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ये रन संख्या पहुंच गई 28। 3.2 ओवर की गेंदबाजी। दीक्षांत 10, काजी जुनैद 17। और काजी जुनैद आज रंग में दिखे हैं, आज उस रिदम में दिखे, उस लाइव में दिखे हैं, क्योंकि पिछले 1-2 मुकाबलों से वो खास योगदान नहीं कर पाए थे अथवास के लिए, अपनी टीम के लिए। पर आज कुछ बेहतर बल्लेबाजी और इस पारी को बड़ी पारी में परिवर्तित करना जरूरी। हल्के हाथों के साथ ऑन साइड पे खेला और पीछे फील्डर तैनात थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 28 बगैर नुकसान के पहले विकेट की तलाश सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब को, और इस बार हल्के हाथों के साथ फिर लेग स्टंप पर आती गेंद को खेला जरूर, पीछे फील्डर तैनात। 1 रन पूरा किया, पर उस और खिलाड़ी ने प्रयास जरूर किया था, हालांकि एक समय में लगा कि गेंद शायद रोक ली गई, पर छिटकती हुई सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ। हल्के हाथों के साथ कलाइयों के दम पर फ्लिक किया था उस और फील्डर, पर उनकी पहुंच से थोड़ी दूर थी गेंद और सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ 4 और खाते में। अथवास इंडिया ने अच्छी शुरुआत अब तक दी है जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकेंड एडिशन 2025। एक और अच्छा स्ट्रोक और एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका मिलता हुआ। लगातार अच्छी बल्लेबाजी आसिफ रसूल के विरुद्ध खूबसूरती के साथ गेंद के ठीक पीछे आकर के ये स्ट्रोक खेले जरूर वहां पर आसिफ रसूल के विरुद्ध बल्लेबाज दीक्षांत कुंडल ने। और इस चौके के साथ रन संख्या अब 36 पर पहुंच चुकी है। 3 चौके आ चुके हैं ओवर से और 1 सिंगल। 13 रन 5 गेंदों से। अंतिम गेंद का आना बाकी 36 बगैर नुकसान के। इस बार ऑन साइड में खूबसूरती के साथ और गेंद सीधे वहां बॉर्डर लाइन से बाहर। 6 मिल जाएंगे यहां पर। खूबसूरत स्ट्रोक, छक्का मिलता हुआ दीक्षांत कुंडल को। 19 रन इस ओवर से आसिफ रसूल के। काफी खर्चीला ओवर गया आसिफ रसूल का। 3 चौके 1 छक्का। ये देख लीजिए, कनेक्शन बहुत बढ़िया, संतुलित होकर के स्ट्रोक को खेला और सीधे वहां सेंट्रल पवेलियन एंड स्टैंड्स में जा लगी है गेंद। और अभिवादन को स्वीकार करते हुए बल्लेबाज दीक्षांत कुंडल। बेहतरीन पारी 24 पे 11 गेंदों से। काजी जुनैद 17-13 गेंदों से। और सोपोर स्टैलियंस के विरुद्ध पहली पारी के आधार पर अथवास इंडिया 11 42 4 ओवर में बगैर नुकसान के। आसिफ रसूल 2 ओवर 25 रन। पिछले ओवर में 6 रन, इस ओवर में 19। काफी खर्चीला ओवर गया है। खूबसूरत दृश्य, लाजवाब और शानदार। ये एक बार फिर प्लेइंग लेवल के सामने सोपोर स्टैलियंस। परवेज रसूल, अंकित नरवाल, आसिफ रमजान, आसिफ रसूल, अजीम काजी, मुश्तबा यूसुफ, ओवैस बाबा, जीशान जहूर, गुलजार गुली, सुमित कुमार और अरबाज। वहीं पे अथवास इंडिया दीक्षांत कुंडल, लोन नासिर, इरफान अली, मलिक काजी, जुनैद, तौफीक आजाद, मुदस्सिर अब्दुल्ला, अली इरफान, मेहरान गनई, मोमिन मुजफ्फर और साजिद। 4 समाप्त 42 बगैर नुकसान के। 42 for none after 4 overs. They're after flyer now. What a start. They entertain the crowd. Little attendance here, but it has been a wonderful show. The 2 men in the middle. It was a bit shaky after 2 overs, but now looks a prolific one. A one they put forward. That is amazing. 42 after 4 overs, going straight over 10 and over is a brilliant start. Walk it away unscathed. It's 42 after 4 overs. That's a lovely start for Athwas India 11 against the likes of Parvez Rasool, Asif Rasool and rest of the pack. Doing wonders with the bat, and I would love to thank Mr. Shafi Para. Thank you for his feedback. Thanks a lot, buddy. Thank you very much. 42 for none. This is going to be over number 5. Now, captain need to rotate his bowlers here. He has to come up with something new, something that will keep Dikshant and Kazi Junaid under check, and that will ask them
some serious questions that will pose a kind of a threat, and batter would like to think over it. It's 42 for none. Inside the line is never easy like this. Shuffle across. That one is going to roll past. Fielder unable to stop the ball. That's going to be runs again. That's 4. And with that boundary, it's 46. Parvez Rasool got the drift of the surface. And Junaid inside the line just helped that one on its way. Gives it a direction and shows it a way. And that paved the way for a boundary in the end. 46 for none. That one, it's a beauty of a delivery and knocks him over. What a delivery. It's gone through the gate. He is surprised. But that is ball of the match to me. A peach of a delivery. And Kazi has no answer. How to keep that one away. How to negotiate that one. As it disturbed the bails and the stumpers. Take a look again. Wow. That extra bounce hitting the top of off. And Kazi can't believe. Looks back in disbelief. But that's the beauty of that experience coming into play. Getting that extra bounce. Turn and drift. Everything was there. Draws him forward. And gets him. Well, surely he's going to look into this one and what happened on that occasion. But that's the beauty from Parvez Rasool. The experience comes into play. We are into the 5th over. Getting a good start. Now losing one of the batters. That brings the newcomer. That brings number 3. They have brought 4 new players for today's game. Coming up with 4 changes is never easy. But I think they were just trying to adjust. And they're trying to introspect what we need for the next round. Because you got just a game in the quarterfinals. You win, you are through to the semis. And you lose, you are out of the competition. So let's see what will happen. How they will adjust it. They need to fix it before that knockout stage. They're testing what is going to be the best possible 11 for the next round. Mehran Ganai is in at number 3 now to face the likes of Parvez Rasool, who's got long on in place. And he's got a mid-wicket in place. Mujtaba is around that mid-wicket area. छियालीस पे 4.2 ओवर की गेंदबाजी. मेहरान गनाई अब नए बल्लेबाज नंबर 3 पे. परवेज रसूल एक विकेट की खुराक मिल चुके हैं. बहुत अच्छी गेंद. एक बार फिर खूबसूरत गेंदबाजी और स्टंप्स पे गेंदबाजी कर रहे हैं. ज़्यादा अवसर दिया नहीं है बल्लेबाजों को. और पिछली वो खूबसूरत गेंद जिस पर काजी को वापस लौटाया था, साफ बोल्ड किया था और वो विकेट मिली थी. वो पहली विकेट सोपोर स्टैलियंस को 46 पे 4.3. परवेज रसूल मेहरान के लिए एक बार फिर बेहतर गेंद. खूबसूरत गेंद. हल्का सा टर्न जरूर था गेंद में. बेहतर गेंदबाजी. मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात के नियंत्रण पूरी तरह से अपनी गेंदबाजी में इस समय परवेज रसूल द्वारा. और मात्र 11 रन 1.4 ओवर में खर्चे. एक विकेट भी प्राप्त किया है, वो इसी ओवर में मिला. 46 से 1 विकेट पे 5वां ओवर. एक बार फिर अच्छी गेंद मिडल स्टंप की ओर. हल्का सा उछालदा और सामने की ओर खेले. वही पास में हल्के बैट और पैड मिला करके सुरक्षात्मक रूप से बगैर किसी रन के मेहरान गनाई 3 गेंदें खेली हैं. खाता खोलना पाके 46 पे 1 आखिरी गेंद. और ऐसे में हल्के हाथों के साथ खेला जरूर. हालांकि अंतिम गेंद थी ये और इस प्रकार से ओवर की समाप्ति. 5 ओवर समाप्त. सोपोर स्टैलियन 46 पे 1. Well, thank you very much, Yuvraj Singh. 47 for 1 after 5 overs. Look, the beauty of cricket. It's a great unifier. And people join us, and it's because of this great game of cricket. Look, Yuvraj Singh joins us, and he has praised the commentary panel. Thank you very much. It's your love, buddy. And this is called the unconditional love. And you know that JK Sports Time never compromise with the standards, as it has kept its standards very high, setting that bar pretty high. And it's your love which keeps we people motivated. It adds a kind of fuel to our tanks. Thank you very much for such kind of assisting feedback, Yuvraj. 47 for 1 after 5 overs. We're going to be in over number 6, and Zishan Zuhur will operate now from Northern Pavilion end under the
clear skies here at the iconic, one of the best and beautiful elliptical in shape Bakshi Stadium, where Red Premier League Season 2 is on its way. This is day number 11, match number 18. And thanks to the title sponsor JK Super Cement and presented by the Athwas Retail. Athwas with confidence as they're batting first here. 47 for one. There's a shot for LBW. And I think it's turned down. So no problem at all after that one pitched within the line. And there is extra bounce on offer. It goes on to hit the knee roll. Yes, of course, knee roll. But it was just outside the line of leg there. So no problem at all. And there was extra bounce. Zishan looks surprised for a while. Looks a bit lip locked there. But no problem. Good call. 47 for one. And Dikshant has got Mehran Ganai in the middle. We're into the 6th over, which is the last over mandatory power play. Restrictions are pretty on at the moment. Batters, they are put on 47. Quite commendable effort from the two openers. Now it's Mehran's duty to take that legacy forward and carry on with the positive intent. And Zishan won't give him any chance here, as he knows that this is the high time to put brakes on. 47 in 6th over. Mehran is on 1 of 7 balls. This time he launched that one. Has that done the distance? It has. Today it looks like that. Ball has a kind of unending love story with that rooftop. Looks like it landed once again onto the rooftop. This is the 3rd occasion we're seeing that ball flying all the way. Another maximum. What a shot. And that is called the Just Bukhara maximum. Lovely. Fearless. And that's what you need. When bowler is trying to cage you, you have to do this and break free. Next one, dig out nicely. Back to the bowler. It's 50 up in the 6th over. Athwas batting with real confidence here and showing that dominance, the balance they have in the lineup. That's little uppish. Has it carried? It looks like that. The way he's celebrating here. Zishan is overjoyed at the moment. Would they like to go upstairs? I don't think so. As batter is ready to walk away. They're going to ask the TV umpire. I don't think so. But look at that one. That is a nice go ball from Arbaz. Has that carried? Has that carried? And TV umpire will surely look into this one here now. विकेट जरूर मिला है और धन्यवाद तारिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपना प्यार विचार देने के लिए, और जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, अपना प्यार प्रेम साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा से बैक करने के लिए जेके स्पोर्ट्स टाइम को, और आपके प्यार की आवश्यकता रहती है, और यदि आपके विचार हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2nd edition 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और यहाँ वो कॉन्फिडेंस दिखा है अथवास 11 की टीम में। 53 पे 2 6 ओवर में पावर प्ले में 2 विकेट गंवाए हैं और 53 रन जरूर बना लिए हैं। 14 ओवर का खेल अभी विशेष। दीक्षांत कुंडल 24 पे जो पारी का प्रारंभ करने आए थे आज जुनैद काजी के साथ, और अभी भी अभिजीत मोमिन मुजफ्फर नए बल्लेबाज नंबर 4 पे, और परवेज रसूल, जीशान जहूर हालांकि इससे पूर्व ओवर की समाप्ति कर चुके हैं। विकेट मिल चुका है परवेज रसूल का ये नया ओवर, और इससे पूर्व 2 ओवर 12 रन 1 विकेट। परवेज रसूल की गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन, मात्र 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन खर्चे और 1 विकेट भी प्राप्त किया है। वो पहला विकेट जो सोपोर स्टैलियंस को मिला था परवेज रसूल के खाते में। दीक्षांत 24, 1 रन और 25 पर पहुंच गए। मोमिन मुजफ्फर सामने 54 पे 2.6 के बाद अथवास इंडिया 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई ये टीम इस 18वें मुकाबले में। और एक और मुकाबला आज की शाम लेकर के आप तक पहुंचेंगे, जहां द रियल सुल्तान समर बुक का मुकाबला
ग्लोबल डू टाइटंस के साथ होना है और डू और डाई की सिचुएशन होगी उस मुकाबले में। दोनों टीमों के लिए जीत अर्जित करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उस मुकाबले की महत्वता ज़रूर होगी अगर दूसरे मुकाबले की बात करें, क्योंकि ग्लोबल डू टाइटंस और रियल सुल्तान समर बुक के बीच आज के दिन का दूसरा डे नाइट मुकाबला। इस समय वर्तमान मुकाबले की बात करें, अथवास इंडिया 11 55 2 विकेट पे 6.2, दीक्षांत कुंडल 25 पे सामने, परवेज रसूल देखिए इस बार उठा दिया खूबसूरती के साथ, बड़ा स्ट्रोक स्टैंड्स में और 6 मिल जाएंगे यहाँ पर। एक और छक्का दीक्षांत कुंडल के बल्ले से और कुंडल आज आत्मविश्वास में दिखे हैं क्योंकि अथवास विद कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस इस समय दिखा है, ये आत्मविश्वास दिखा है इस बल्लेबाजी में। परवेज रसूल के विरुद्ध बड़ा स्ट्रोक आसान रहता नहीं है, पर ये आपकी कला को दर्शाता है। अब किस शैली के बल्लेबाज है वो आपने यहाँ पर निश्चित कर दिया इस स्ट्रोक के चलते। एक बार सामने खेला, हालांकि परवेज रसूल ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास, वो सफाई से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, पर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 61 पे 2, 6.4, 7वां ओवर 31 पे दीक्षांत कुंडल। और खूबसूरत आकर्षक विजुअल्स है, आकर्षक वातावरण है बख्शी स्टेडियम के जहां ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट वर्तमान में चल रहा है। इस बार फिर जगह बना करके अपने आपको संतुलित किया और ऑन साइड में खेले, हालांकि एक रन जरूर मिल जाएगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। मोमिन मुजफ्फर जो 1 पे नाबाद है, 31 पे कुंडल, कुल रन संख्या 6.5 के बाद 61, 2 विकेट पे, 2 विकेट अभी तक मिले हैं। 1 विकेट जीशान जहूर को, 1 विकेट परवेज रसूल को, और उसके अलावा आसिफ रसूल से गेंदबाजी करवाई है, उन्हें विकेट नहीं मिला। 3 गेंदबाजों का अभी तक चयन किया गया है। परवेज रसूल अगली गेंद लेकर के, लीजिए एक और विकेट, खूबसूरत गेंद, अब बिल्कुल पढ़ नहीं पाए, खड़े के खड़े और गेंद सीधे स्टंप्स पे जा टकराई। परवेज रसूल को मिल गई दूसरी सफलता। 3 ओवर 21 रन, 2 विकेट, 62 पे 3, 7 के बाद Athwas India 11. Stumps are shattered. Another beauty from iconic Parvez Rasool. Take a look again. Oh, gone through the gate. Twice we're seen against the left-handers. It's pretty effective, and this is the second occasion where we saw the left-hander is caught in two minds, we can say. And he's surprised, and look at that one. He has no idea how to negotiate it. Unable to keep that one away, as Parvez has the last laugh. He has taken that leaf out of his book. This is the third one down for Athwas India 11. Dikshant is still there. And Dikshant has shown that he's a batter of next level. He can be the batter of big games and the big stages. He can perform when given an opportunity. As he's batting on 32 of just 15 balls. He's batting with a strike rate of 200, and that brings the number 5. It's Nasir Lone and number 5 Mujtaba. Hugs him there. These are the lovely and lively moments in the middle. I remind you once again, it's day number 11, match number 18 underway. We have virtual quarter-final. Literally, we can say this is coming your way. The game number 19 of the tournament. That promises to be a great game of cricket, because the team which will win will stay in the competition, and the team which will lose will have to pack their bags. So it's 62 for 3 after 7 overs. Parvez has picked up 2 of his 3 overs, gone for 21. A batter surface to bat on. Off spinner removed 2 of the batters. Parvez Rasool. Zishan has got the ball in his hand. Zishan will bowl against the likes of Lone Nasir and Dikshant Kundal. Driven straight. There is skipper not for runs. They're going 8.65 and over. Isn't bad. It's a good current rate. They need to maintain it. It should be a continuous process in today's game. That's a big shot. That's aerial. And it's into the crowd again. 6 more. And Dikshant Kundal, who was struggling over the past couple of days, now he's finding that rhythm again. And that's gone over, long gone for a maximum. Lovely timing. What a connection. And get 6 for that. He didn't move. He was damn sure that 6 were written all over it. And with that 6, the score propelled to 68. Now that was a full toss. Unable to capitalize. He would have wanted a big shot there. It was better to keep it away down to that extra cover portion. Would have been more than 1. But he was unable to get enough on it. Next one, stand tall. Will settle for 1 here. 69 for 3. And Dikshant is finding that rhythm again.
Those lyrics are up to the mark today in today's game. The way he's middling the ball, the way he's timing the ball, and the placement, footwork, everything is in one place. What a player. Treat to watch some of the cracking shots. Now Nasir Lone is in at number 5. The Bandipura based cricketer walks in at number 5. A tricky situation as they're 3 down. Partnership is what they require. It's beaten straight away from Zishan. That's a beauty. When bowler beats the batter, he feels that he has done something, and that's an achievement. Now there is something that irks the batter, that is disturbing Lone Nasir there. Some adjustment needs to be done over there. Something is disturbing. I think that whiteboard, the reflection of the whiteboard, sometimes batter get distracted. So that's the beauty of keeping that side screen in place. 69 for 3. Solid defensive shot, no run taken. Over comes to an 8 done. 3 for 69. Batting first, Athwas, India 11 against Sopore Stallions. Athwas brought in 4 changes. I think this is the high time, and it's the better way to test your batting skills and the strength you possess in the lineup. On the other side, if we talk of Stallions, after 8 overs, they are 3 down, and we're just talking about that they're testing their potential and the best possible 11 for the next game. And now our request is going to be for those who are abusing each other. And you remember those words, my sentence which I often use, hey dude, don't be rude. So it's my request once again hand-foldedly to each and every beloved listener and viewer. Please respect each other. Being human beings, being Muslims, we should respect each other. Otherwise, you know that what will be done. An effect of your bad language, you will feel that in the later on today, and in coming seconds and minutes, you will see that you won't be able to see the match. So before it's too late, better late than never. So better is to wake up and don't do all this. Don't indulge in such practices. Overcome all this. Just enjoy the game. It's just a cricket match. 2 good teams in the middle. Just praise their talent, what they possess, how they're entertaining you, what needs to be done. That's your job. 69 for 3. 8 overs done. We're going to be 9th over as Uwais Baba is getting ready again. He's back into his prime over the past couple of days. What can he do in today's game? It's going to be important to find the rhythm again here. He has to adjust his lines. He has to mend his lines against the likes of Athwas, India 11. Goes and bows. The first one, that was a good one. And nothing wrong with that one, as Dikshant was trying to pull it. He's loving that length. He's loving that pace. And Dikshant needs that pace. He is a batter who's got all the techniques. When it comes to the stroke play, he possesses all the shots from cricketing book. And Dikshant is coming from that Udhampur area of Jammu and Kashmir. He makes his place in Athwas, India 11. That's an important achievement. That is something to cheer for the boy. And back home, they will be all glued to the mobile phones and laptop screens right now. And his beloved listeners and viewers will also want to see something that we call the crackerjack of a knock, as he failed over the past couple of days. And he was unable to operate in his own style. And today he has found that meaty part of the blade that we call the carpet, and he has scored some invaluable 39 of just 22. नौवीं की शुरुआत 69 पे 3 उवैस बाबा एक बेहतरीन गेंदबाज, पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, पर उनकी टीम वो मुकाबला जीत नहीं पाए। यहाँ एक अच्छी गेंदबाजी की आवश्यकता, विकेट की आवश्यकता। 3 विकेट अभी तक मिले हैं सोपोर स्टैलियंस को। पहला ओवर उवैस बाबा का 9वां पारी का 69 पे 3 कुंडल के लिए। अच्छी गेंद एक बार फिर, आत्मविश्वास दिखाया आज दीक्षांत कुंडल ने, जो पिछले मुकाबलों में खास योगदान नहीं दे पाए थे, पर इस मुकाबले में शुरुआत से ही उनके इरादे स्पष्ट दिखे, बेहतर टच में दिखे आज इस मैच में। सुबह से जब से वो बल्लेबाजी के लिए आए प्रारंभ में, और एक अच्छी पारी खेली है 22 गेंदों से 39 पे नाबाद है। 69 पे 3
8.3 ओवर की गेंदबाजी नॉर्दर्न पवेलियन से बाबा, जिनके पास गति है और एक्यूरेसी के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की थी। उसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता, यहाँ पे अतिरिक्त दबाव बनाना होगा, बल्लेबाज की रेंज से थोड़ा गेंद को दूर रखना होगा। ये देखते हुए जो आपने एक आकर्षक फील्ड प्लेस में लगा कर रखा, उसके अनुकूल आप गेंदबाजी करें तो फिर अतिरिक्त दबाव बना सकते हैं बल्लेबाजों पर। 70/3, 8.4 ओवर की गेंदबाजी, 9वां ओवर और 8.06 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है। अच्छा खासा तापमान, 30 डिग्री के आसपास तापमान इस समय, और खूबसूरत और बेहतरीन ये क्रिकेट मैदान, ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम, जहां ये प्रतियोगिता वर्तमान में चलती हुई। इस बार बैकफुट पर जाकर के क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, ऑन साइड में खेले, एक सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाज। अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, रन संख्या में वृद्धि होती हुई। 71/3, 9वें ओवर की गेंदबाजी। और बाबा का ये ओवर अभी तक बहुत बढ़िया गया है, मात्र 2 रन उन्होंने अभी तक खर्चे हैं 5 गेंदों से। तो शुरुआत बेहतर गेंदबाज ओवेस बाबा की सोपोर स्टैलियंस के लिए। 9वां ओवर, 71, 3 विकेट अभी तक गवाए हैं। अथवास इंडिया 11 ने जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। ये बेहतर स्ट्रोक है, खूबसूरती के साथ ये कॉन्फिडेंस दिखा है कुंडल में आज सुबह से, जब से वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और एक और चौका बटोरते हुए अपनी टीम अथवास इंडिया 11 के लिए। 4 और खाते में, अंतिम गेंद पर आया चौका और ओवर की हो गई समाप्ति, 9 समाप्त यहां। और खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतर 4 बटोरे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और इस चौके के साथ ओवर की भी समाप्ति, 9 समाप्त। अथवास इंडिया 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई ये टीम 75/3, 9 के बाद 11 ओवर का खेल। बाबा के पहले ओवर से आए 6 बढ़िया ओवर जा रहा था, पर अंतिम गेंद पर वो कमाल का चौका, दर्शनीय स्ट्रोक और बेहतर बल्लेबाजी। एक और मुकाबला आज शाम 6:30 बजे आपको तक पहुंचाएंगे, और मुकाबला डू आर डाई की सिचुएशन दोनों टीमों के लिए, क्योंकि रियल सुल्तान समरभोग और ग्लोबल लड्डू टाइटंस के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला। जीत आप इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे, हार तो प्रतियोगिता से बाहर। खेला जरूर था, फील्डर तैनात थे, उन्हें गेंद को फील्ड कर लिया कवर क्षेत्र में। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 75/3, 9.1 ओवर की गेंदबाजी। लोन नासिर ने 3 गेंदें के लिए 1 रन मात्र बनाया है, पर एक छोड़ से सहयोग करना होगा दीक्षांत का। यह बेहतर है, गैप में गई है गेंद, पीछे फील्डर तैनात हैं, संभवतः गुलजार गुली। वो जब तक वे गेंद को फील्ड करके थ्रो करते समय था एक सिंगल लेने का। 76/3, 10वें ओवर की गेंदबाजी, 163 प्रोजेक्टेड स्कोर। आप इस करंट रन रेट के साथ ही बल्लेबाजी करते रहेंगे, इस रन गति के साथ आप अंत तक बल्लेबाजी करेंगे तो फिर 173 तक टीम पहुंच सकती है, जो 8.14 का है। ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद, ड्राइव किया पर सीधे फील्डर के पास। परवेज रसूल वहां पर तैनात, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। 2 विकेट अब तक मिले हैं उनको, एक जीशान जोहर को अब तक की मिलने वाली 3 सफलताएं 2 गेंदबाजों के खाते में। 44/25 गेंदों से फिर ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी ये गेंद, फिर ड्राइव किया और एक बार फिर गेंद परवेज रसूल के पास बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। एक और अच्छा ओवर, पिछले ओवर में 6, इस ओवर में 4 गेंदों से 1 रन जीशान जहूर के। 2.4 ओवर में 14। अनुशासन, पहनापन, किफायतीपन गेंदबाजी में। इस बार लपेट कर ऑन साइड में खिलाड़ी हैं तैनात, सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में। और मात्र 2 रन आए हैं इस ओवर से। रन गति पे अंकुश, रन गति पे विराम, बहुत बेहतर गेंदबाजी, चतुराई के साथ अब तक गेंदबाजी की इस ओवर में। तो ऑफ स्टंप से बाहर रखे हैं, दोनों बल्लेबाजों की रेंज से थोड़ा बाहर रखने का प्रयास इस गेंदबाज का। ये कुंडल सामने और यहाँ पर रोकने का प्रयास था, वो असफल हुआ। बैकअप पे खिलाड़ी तैनात, दूसरे रन की मांग, वो दूसरा भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अंतिम गेंद पर 2 ओवर की समाप्ति, यहां 10 समाप्त, 79/3 अथवास इंडिया 11।
Backlie again. 11th over. Baba into the attack. Fresh over. And the first ball. He plays it on to the offside. Not for runs. 3 for 79. Athwas, India 11 batting first against the likes of Sopore Stallions, who played 2 games in the tournament, winning first one and losing the second game. They lost the second one to Royal Goodwill yesterday. Athwas in his second over is gone for 6. Dikshant 45 of 28 balls. And that one, look, how did that miss the stumps? Baba can't believe even the batter is in disbelief and is a bit lucky there to survive. Scary would have been gone there. Missed by Whisker, he's lucky. And ball once again, it dips, it drops off a certain length that did caught him in 2 minds. Dikshant Kundal is a bit lucky there, 79 for 3. He's on to 45, just 5 away from his individual 50. Baba again, beautifully bowled. This one holding its line tight. Just past an edge here. Baba is getting that rhythm back. He is getting back into his prime. Hitting the right lines and lengths. The surface, it's also assisting Baba here. He's got some purchase there. And he himself is getting back into that good form with the ball. The lines and the lengths. We were earlier on talking about that he need to mend his lines. Now he's getting into that kind of a groove. That one works it away too long on. He's going to get one here. And you can't afford too many dot deliveries. Dot balls will bring pressure on batters. You have to keep that scoreboard going and ticking all along. Rotation is important. That's going at the moment. In between, a bowler chip in with a couple of dots. And that is going to make things little tricky and tough for the batters. They will have to adjust. The rotation is must here. Stage is set for Athwas India 11, 3 for 80. Nasir alone there. Works it away. It was an easy move from batter, but he decided to shuffle across, getting right behind and keeps it to mid-on area where there is a possibility of a single. The bright sunshine or the gentle breeze is gaining some pace around the center, which is visible. Athwas India 11. The captain won the toss and decided to bat first. And they want to put runs on the board. Good shot again. The technique he's showing here. Niced away onto the onside. 82. 20 over number 11 on a high again. Just 3 singles from this one. Good over from Baba again. Baba has been a force to reckon, and he has been a good one who has got that recognition in North Kashmir. He's trying to hit the right lines from south to north and in between here at the Central Kashmir's iconic and one of the beautiful and picturesque venues of Valley, that is Bakshi Stadium. Thanks to the title sponsors of the tournament, JK Super Cement, presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Dikshant is holding the innings together here. A man of big stages. Man of the moment, and that one, that flies again. This is 6 number 4. And no problem there as it goes the distance. 88 for 3, and that brings a 50. For Dikshant Kundal on to 53 of 33 balls. 4 sixes, 5 fours. He used 33 balls.
Brilliant knock this. And that run drought comes to an end. Finally, there is spring and the blossom for Udhampur boy. He finds his prime back into the form with some lovely copybook, textbook cricketing shots. On to 54 now. Struggled in last two games. And the next one, it's Nasir Lone keeps it away. He's going to get one here. The hard work from Baba in that other over. Now Zishan was trying to follow that, trying to fit in the boots. Looking forward to keep things tight. But Dikshant has something different in his mind as he decided to take him on. And he knows that they need to up the tempo. They need to pile in excess of 150, 160. Right now they're piling at the moment. One more run added to the tally. And with that there is addition. Fielder can't prevent that single. The quickness between the wickets there. The two batters. They sprint for a quick single. Zishan again. This one it was a bit quicker. Before batter could respond and react. It's gone into the safe hands of wicketkeeper, who's up to the stumps, Asif Ramzan. Once again he works it to short cover. Well, Dikshant is eyeing some of the big shots here. As he's trying, his stance is telling us that he's making that kind of adjustment where it is crystal clear that he wants some big shots, targeting those bigger boundaries. Zishan finished his quota of 4 overs, 1 for 28 with economy of 7 and over. Still good from Zishan Zohur, and he's got 1 wicket to his name. And that is that shot. Not looking towards the ball, as he was damn sure he knew that it's a 6. It's my hit. It will fetch more than 1. And in the end it was half a dozen. Captain goes back to the Bij Bihara Express. It is Mujtaba Yusuf. Over to you. थैंक यू मनोवर. 93 पे 3, 12 समाप्त 8 ओवर का खेल. लोन नासिर 8 पे और दीक्षांत कुंडल ने एक बेहतरीन अर्धशतक पूरा करने के बाद अभिजीत 55 रन बनाए 36 गेंदों से. 155 प्रोजेक्टेड स्कोर इस समय. वर्तमान रन गति 7.75 की और इसी रन गति से रन बनाती रही टीम अथवास इंडिया की, तो 155 तक पहुंच सकती है. 8 ओवर का खेल. मुजतबा यूसुफ 1 ओवर 10 रन. छोड़ बदला गया है. पहले ऐसा बोलते इसी छोड़ से वो गेंदबाजी करेंगे. हालांकि एक समय ऐसा लगा कि शायद उनका एंड चेंज किया गया है, पर नॉर्दर्न पवेलियन एंड से उन्होंने शुरुआत की थी गेंदबाजी में. उसके बाद मात्र 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद हटा लिया गया था और अब दूसरे स्पेल में वो गेंदबाजी करेंगे. पहली गेंद फुलर लेंथ ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया था गेंद को, पर सीधे फील्डर के पास उन्हें गेंद को फील्ड कर लिया. रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं. रन संख्या 93. 12.1 ओवर की गेंदबाजी. दीक्षांत 55 पे. कुछ बातचीत लोन नासिर और दीक्षांत कुंडल के बीच कि यहाँ से अब रन गति को बढ़ाना ज़रूरी है, अवश्य है, क्योंकि 7 विकेट हाथ में और यहाँ कुछ अतिरिक्त प्रयोग करने होंगे. स्कोरबोर्ड को थोड़ा गतिशीलता देनी होगी इन दो बल्लेबाजों को, और यही प्रयास शायद रहेगा दीक्षांत कुंडल का, क्योंकि वो सेट हैं 55 पे 37 गेंदों से सामने. और गेंदबाजी मुजतबा यूसुफ के पास एक बेहतरीन गेंदबाज, तेज गेंदबाज, अच्छी खासी गति, सही लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदबाजी करते हैं. बाएं हाथ से दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ड्राइव किया सामने, और जब तक मिड ऑफ के खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था रन लेने का. एक और सिंगल. 93 से बढ़कर 94. 3 विकेट पे 13वां ओवर पारी का. क्या बेहतर बल्लेबाजी अब तक दीक्षांत कुंडल ने की, और सहयोग मिला है, समर्थन मिला है दूसरे छोर से लोन नासिर का. अच्छी पारी खेली है लोन नासिर ने. हालांकि मात्र 8 रन भी बनाए 9 गेंदों से, पर एक छोड़ पकड़ करके रखा है और दूसरे छोड़ से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है दीक्षांत कुंडल पर. वो बेहतर बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं. 94.
3 विकेट पे। और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास, उस गेंद के पिच तक पहुंचे जरूर थे पर वो कनेक्शन नहीं मिला। लोन नासिर को थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर रखने का प्रयास इस समय मुजतबा यूसुफ का, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। जानते हैं लोन नासिर के विरुद्ध आपको सही दिशा और लंबाई पर सही लेंथ पे गेंदबाजी करनी है। छोटी गेंद से बचना होगा, चाहे कुंडल उनके सामने हो या फिर नासिर लोन, क्योंकि जितना आप हाफ ट्रैकर से बचेंगे, ओवर पिच गेंदों से बचेंगे, उतना आपके हित में, आपकी टीम के हित में बेहतर रहेगा। परवेज रसूल लगातार मुजतबा यूसुफ से बातचीत कर रहे हैं। 94 पे 3। इस बार वो पिछली गेंद पर जो स्ट्रोक तलाश रहे थे, इस गेंद पर मिला, ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ा बल्ला तिरछा आड़ा किया, दिशा दे दी। सामने फील्डर तैनात थे, जब तक डीप पॉइंट से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता। 1 रन और खाते में। 95 पे 3, 12.4, कुंडल 56 पे। धीरे धीरे से 1-1 रन से इस पारी को आगे चला रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज, क्योंकि इस ओवर में 2 ही रन आए हैं, .1.1। कुल मिलाकर 4 गेंदों में 2 डॉट 2 सिंगल आए हैं। अच्छा ओवर अभी तक घटा है। 95 पे 3। 13वां ओवर, अथवास इंडिया 11 और सोपोर स्टैलियंस के बीच 18वां मुकाबला। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। इस बार अंदर लेकर के आए, पढ़ने के बाद अंदर आती हुई गेंद पैड से टकराई, वही ऑन साइड में लौट की दौड़ पड़े थे रन के लिए, पर मना किया वहां पर। पंचानवे पे 3, 12.5 ओवर की गेंदबाजी। एक गेंद बची है इस ओवर की, मुस्तफा आखिरी गेंद लेकर के, अच्छी गेंद, एक बार फिर बेहतर गेंद, ऑफ साइड में खेल करके दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज सिंगल के लिए। 1 रन और खाते में। ओवर की हो गई समाप्ति, 13 समाप्त। सोपोर स्टैलियंस के बाद अथवास इंडिया 96 पे 3। 7 ओवर का खेल, मुजतबा के अभी 2 ओवर बचे हैं। परवेज रसूल ने अच्छी गेंदबाजी की, एक और उनका भी शेष संभव थे। जीशान जहूर ने भी 3 ओवर की गेंदबाजी की है। उसके अलावा ओवेस बाबा ने 2 ओवर की गेंदबाजी। आपके पास विकल्प हैं गेंदबाजी में, पर यहाँ विकेट तलाशना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सोपोर स्टैलियंस को विकेट चाहिए। अगर आप आने वाले 2-4 ओवर में विकेट को सुरक्षित रखते हुए, जो इस समय करंट सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, और 2-3 ओवर इसी प्रकार से साझेदारी को और बेहतर किया, और अगले 4-5 ओवर में आप बड़े प्रहार कर सकते हैं, और ऐसे में दीक्षांत कुंडल और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं ध्यान देना जरूरी, सोपोर स्टैलियंस को विकेट तलाशने जरूरी, और अथवास इंडिया को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी। 13 के बाद 96। 42 balls with 7 wickets in kitty. There are 7 of them in their dugout. Dikshant batting on 57 and Lone Nasir on to 9 of 11. Change in the bowling department. Ankit Narwal is given the ball. He's going to roll his wrist over the ball. Captain is having a word, and Ankit has that experience. What will he do now? Athwas with confidence. They're going strong at the moment. 3 for 96. Ankit is going to be medium pacer. Straight away, right on money. It did bounce off the good length spot, and he keeps it back to the. He keeps it away and trying to keep it back to the ball, but it deviated a bit. So no problem there. 3 for 96. And Dikshant, as he's got his eyes in, he knows what kind of a surface it is, how the wicket is behaving at the moment. He knows the behavior of surface. Ankit in search of a breakthrough here. And that one, it stays low. Could be tight. Directed needed. It would have been Lone Nasir, a man in question, as he was running towards the danger end. But no problem. He's okay. He's fine there. Asif Ramzan on his knees. He wanted that direct hit, but missed the target. And that saved Nasir Lone. He's coming from Bandipura.
He was part of that national camp last season, where VVS Lakshman was their mentor. He worked under his supervision in that camp. 3 for 97. We are in 14th over. Ankit this time. There is bounce for Ankit. There is a nice carry on offer. Ankit keeps it a bit away. Nasir makes that ready-made room. Gives himself a touch of a room. There is Sumit Kumar at cover boundary. Now he's asked to stay a bit wide. Little adjustment on that portion. He's asked to stay a bit wide. He did move a couple of yards. That's a big shot. Where is this one going? There is a man at long on. Oh, that's beyond the boundary line for a maximum. It's 100 up for Athwas, India 11. And that shot, a shot of authority. They know that they need runs. And look at that one. He was trying to mix it up, but the batter finds it. He read it properly and given it a direction, shows it away. 103 for 3. The next one, it's a wavered one. It's a big wide. It's a huge wide. Hits up to the wicketkeeper. And it's blessing in disguise that didn't go for the 5 wides. Look at the wicketkeeper. He puts in a dive. And Ankit Narwal is pretty happy. He looks okay. He looks fine. And as he praised the wicketkeeper for that stop, he can call it incredible one. As he saved, it would have been 5 wides, just a wide. An extra ball is going to come now. He has to reload it. Flicked away nicely behind square. Now the two batters are trying to accelerate. That's the good part of their innings. And that's what Athwas is looking for right now. They need these runs. And the two batters are getting into their act now, showing some intent, the power, the skills and that technique. Working the ball, nudging the ball, placing the ball. This is 14th over we are in. And this over we are seeing 6, 7, 8, 9 coming. Not bad. This time a quality shot again. We'll find a single there. It's 14 done. Ankit Narwal is gone for 9 of his over. And overall, if we include that wide delivery, that means 10 coming of this over. And take a look. This is their dugout. Irfanul Haq is padded up. Maybe the next one to join. 2 of them in the middle. We'll have to wait and watch how long Nasir and Dikshant will carry on. Need to persist. One has to go big. I think both can try and find a way where they can score runs. Both can express themselves here. It's the high time and a stage where you have to look for those runs here. On the other side, captain, it's going to be interesting what he's going to do now. How he will come up with plan B. Will that work? That's another thing that remains to be seen. And all the listeners and viewers, they're eagerly watching this one and looking forward how the captain will rotate his bowlers, how he's going to marshal his troops, what kind of strategy he's going to use now. It's 106 for 3. It looks Mujtaba has got the ball. Ankit, that over is a 9 coming. And that wide delivery makes it 10. And overall it's 106. They're going 7.57 on over. If they carry on with the SAM, that means they will finish at a 150. Or beyond that will make it a good contest. But on the other side, they're just 3 down. That means they are 7 of the batters. And Athwas should try and finish around 160-70. And that will give them 10-20 runs, a kind of extra bit of cushion. And bowlers will get something to bowl at. As Mujtaba begins the fresh over from Southern Pavilion. And
This time advances. Nothing there. It's a dot ball in the end. Dikshant Kundal. Aggression meets class. The outcome is 58 of 44. And is still going strong. Mujtaba Yusuf. Yet to find his first one this afternoon. Man at long on. There is a long off in place. Mid wicket and square leg. Oh, beautifully bowled. He dropped. Should have been taken. Excellent delivery. I was just talking about that. He's yet to find his one. But that one, it did surprise Dikshant Kundal. And little surprise, Mujtaba having a word. Start with that. It kicked. And to take a look again. Oh, wow, what a delivery. Leaving the right hand. Finds an edge. But not to perfection. As it gone down. Asif Ramzan would have been a good one. Should have been taken. Catches win matches. Good gobble. That's all he needed there. 107 on the board. Mujtaba, bit unlucky. He's having that tough luck. This afternoon he has done all the hard work. Gone for just 14 into his third over. (107). This time comes forward onto the front foot. Does well on that occasion. Now they're looking for runs here. They're trying to break free. Current rate. It needs little improvement there. It should be around 8-9 and over. It is 7 point something and over. It's 7.38 and over. And that's a good shot. It's a lovely toss shot of the bat of Nasir Lone there. And he's going to pick one. The dot ball percentage will affect the game. This will enhance the bowlers to equip with more techniques that will cause a kind of problem and that will trouble the batters. They will surely come up with fine techniques to find that right area. They can make an impact and will make others feel that impact here. A little back away there, plays it to mid-off area. There is Asif Rasool. Well, Dikshant is just shadow practicing. He is now trying to replicate. He is trying to show those shots. What should have been done. What kind of elegance I missed there. What was lacking. What should have been done. How to overcome. It would have been more than one. But this time he comes down the track. It's in the gap. And finally manages to break free. It's Nasir Lone who comes up with a boundary. 113. When you feel cagey, you can't keep batter quit for a long time. And batter has to find a way where to score. As he comes down the track, clears that field inside the 30-yard. The inner field finds boundary to perfection. 1-1-3 for 3. 15 overs gone. 5 overs are going to come. 30 balls. Lone Nasir 21 of 17 and Dikshant is betting on 60 of 46. The rhythm we witnessed at the beginning and that pace and energy, that's also decreasing for a while. Now he has to attack for a while here. Got to look for runs here. Find some areas. He has to come up with that application as they require some runs here badly. 15 done, 113. There is nothing to worry. They have 7 of the batters in kitty. Over number 16, who's going to bowl from
Northern Pavilion, and it looks like captain is happy and is ready to go with Ankit Narwal. His first over gone for 9, and they're happy to concede 7, 8 or 9 and over. They're not feeling it difficult at the moment. Trying to flick it, there was extra bounce. That didn't allow him to work it away. He's got a protection behind square on the on. And there is a short fine leg also in place. That's why he's keeping it onto the pad line. But when it comes to the batter like Dikshant, he has that fine talent. He can keep it fine up the field. He can play it either side. He's finest there. 3 for 113. They're batting first against Stallions. This time inside the line. I think he has hurt himself. He takes a body blow. He's down for a while. And that extra bounce, it did kick again. Abrupt, all of a sudden. Not what he anticipated. He never thought that this will kick like this. And hits him on the body. Oh, take a look again. It's ouch. And oops. Looks okay, looks fine, and is getting ready to face the next one. Look how he was down on his knees. He's gonna go forward. He's trying to examine that area. What was there? As it all of a sudden climate hurries. 3 for 114. That one, it's gone aerial. And it's gone onto the rooftop for maximum. 6 more, 120 on the board. One that teased it, the next one. This is going to tease the bowler. And right connection. Oh, directed it for a magnanimous hit. Little inside the line. And there was no more enough or extra bounce to tease and annoy the batter. It's 120 for 3. This is 16th over we are in. This time advances, skips down the track. Unable to beat that man at long on, Gully. He's so quick there. That's why he's used as boundary rider. Fittest, agile Gulzar Guli at long on area. Dikshant to face the next one from Ankit Narwal. Narwal got 2 balls left in this over. And Dikshant pulls that one. And that's aerial. Where is this one going? No problem there. As it's into the stands, it's into the grandstand for a maximum here. Another 6, and that 6 coming off the bat of Dikshant Kundal. As I earlier thrown out, he has to pick now, and he picks it up. He's now trying to grab, and his size partner, who gone downtown earlier on, now he's decided to take him on. Not a tall man, but that sort of high stature coming into play against the likes of Ankit Narwal. That is the second 6 of his over. It's a no ball. He overstepped it here. The pressure is back onto the bowler. And this is telling his approach. And he lost his control on that occasion. He overstepped it. Pressure completely back onto Narwal here. He's gone for 6, 6, 12, 13, 14. No ball and a single makes it 16. Free hit for Nasir Lone. He will be eyeing another big shot here. He's got the license. It's absolute freebie. On to 28. Here comes the free ball. Now shuffle across, trying to sweep it. No connection, just a single. And that marks the completion of over number 16. It's 130 for 3. 16 समाप्त 130 पे 3 7 सुरक्षित
अथवास इंडिया 11 के पास विकेट्स की बात करें, जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन बख्शी स्टेडियम ऐतिहासिक मैदान, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और अथवास इंडिया 11 130 तक पहुंच चुकी है, कुल रन संख्या 3 विकेट पे, 4 ओवर का खेल। हमने जिक्र किया था कि 12 से 16 तक आप पहुंच जाएं, आपके पास विकेट सुरक्षित रहेंगे, वो विकेट हाथ में है, 4 ओवर बचे हैं, तो यहाँ से अब कोशिश जरूर होगी बड़े प्रहार की, बड़े स्ट्रोक्स की, चाहे वो दीक्षांत कुंडल हो चाहे लोन नासिर हो, क्योंकि लोन नासिर 28 पे हैं और 68 पे 49 के दूसरे दीक्षांत कुंडल, दोनों सेट बैटर। तो यहाँ कोशिश अगले 4 ओवर में 40-50 रन और जोड़ लें तो 180 तक वो कोशिश जरूर होगी अथवास द्वारा, और मैं समझता हूँ वहाँ तक पहुँचने का सफलतापूर्वक प्रयास जरूर होगा, और पहुँच भी सकती है टीम। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी संभव है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। ओवेस बाबा 2 ओवर 9 रन, विकेटलेस रहे हैं, विकेट अभी तक मिला नहीं है, इसी छोड़ से वो एक और ओवर लेकर के 17वां ओवर पारी का 130 पे 3, अथवास 28 पे सामने लोन नासिर। पहली गेंद का सामना करने के लिए इस ओवर में ओवेस बाबा का खूबसूरती के साथ ऑन साइड में फील्डर तैनात, जरूर सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ 131 पे 3, 17वें ओवर की गेंदबाजी। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब, और उसके अलावा रेड एफएम जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और मैच फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुखारा, हमदान और कैंजल गेट स्पोर्ट्स क्लब एचएनडी और वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब। थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स, और सभी श्रोताओं का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए, प्यार देने के लिए बने रहिए, आनंद लेते रहिए। यहाँ कनेक्शन सही, पीछे फील्डर गुलजार गुली है, पर सिंगर जरूर मिल जाएगा, 1 रन और खाते में। लगातार प्रयास अब दोनों बल्लेबाजों, क्योंकि अब इरादे स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ से अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है, आक्रमण करना है गेंदबाजों पे, क्योंकि ये 4 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण, और 4 ओवर में अगर आप 10-11 रन प्रति ओवर के हिसाब से 40-50 रन तो जोड़ने होंगे। वो कोशिश यहाँ पर अथवास की, अथवास इंडिया 11 क्रिकेट टीम की 180 के लक्ष्य को छुआ जाए, एक चुनौती दी जाए दूसरी पारी में सोपोर स्टैलियंस की टीम को। लोन नासिर 29 पे, 132 पे 3, और बाहर नीचे रहती हुई गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल भी उछाल था नहीं गेंद में, स्ट्रोक लिया जरूर था पर गेंद काफी नीचे और सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ संतुष्ट, 2 सिंगल, उसके बाद 1 डॉट, 3 गेंदें हुई है, 2 रन मात्र आए हैं, 132 पे 3, 17वें ओवर में सोपोर स्टैलियंस के विरुद्ध अथवास इंडिया 11 अपने पूल ए में यह आखिरी लीग मुकाबला खेल रही है, और पिछले 3 मुकाबले में 2 जीत और 1 हार, उनके खाते में 4 अंक। और वहीं पे सोपोर स्टैलियंस ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, 1 जीत 1 हार, 2 अंक उनके पास, ये उनका तीसरा मुकाबला, और जीत अवश्य चाहिए यहाँ से सोपोर को, कोशिश जरूर होगी स्टैलियंस की। ये बड़ा है, ये खूबसूरत, सही समय पे कनेक्शन, और कनेक्शन भी सही, स्टैंड्स में गेंद, छक्का मिलता हुआ जस्ट बुखारा, 6 और खाते में, 138 पे 3, कमाल का स्ट्रोक। अब किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है बल्लेबाजों पर, क्योंकि विकेट हाथ में है, ऐसे में इस प्रकार के बल्लेबाजी अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि एक हाथ हैंडल से छोटा जरूर था लोन नासिर के, पर फिर भी गेंद स्टैंड्स में जा लगे, 6 मिले यहाँ पर लोन नासिर को, रन संख्या 139 तक पहुंच चुकी है। अथवास इंडिया की बेहतरीन बल्लेबाजी, एक बेहतरीन और आकर्षक रोमांचक स्थिति वाला ये क्रिकेट मुकाबला, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करनी है सोपोर की टीम को। 138 पे 3, 16.4 ओवर की गेंदबाजी, और अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में, 2 सिंगल और 1 छक्का, 8 रन आ चुके हैं ओवर से। लोन नासिर 35 पे, 24 गेंदों से दीक्षांत कुंडल 69, 50 गेंदों से 138 पे 3, पिछली गेंद पर वो छक्का। और कुल मिलाकर अगर हम जिक्र करें तो 8 रन आ चुके हैं और ओवर से, और अभी भी खेल में थोड़ी सी विलंबता, और गेंद समझते वो जो सामने शामियाना लगा है या कि ये टेंट लगा हुआ है और वहां पे जाके लगी है, और अब जाकर के वो गेंद वापस आई है, तो आमतौर पर इस प्रकार के दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं।
सीधे जाकर के वहां पे गेंद लगी थी और थोड़ा सा समय जरूर लगा। 16.4 138 पे 3, लोन नासिर 35, दीक्षांत कुंडल 69। क्या साझेदारी निभाई है, क्या पारी खेली है इन दो बल्लेबाजों ने अथवास के लिए। बाबा इस ओवर में आखिरी बार 138 पे 3। इस पर पंजों के बाले चलते हुए सामने ऑफ साइड में उसको दिशा दे दी थी दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या इस समय 138 पे। ये 17वां ओवर और अभी भी एक गेंद का आना बाकी। 138 पे 3, 8 रन आ चुके हैं ओवर से। लोन नासिर और दीक्षांत कुंडल ने बेहतरीन पारी और बात हो रही थी कि एक बेहतर साझेदारी उन्होंने निभाई है। और वहां पे जब तीसरा विकेट गिरा था तो तब लोन नासिर आए थे दीक्षांत के साथ और न सिर्फ एक शांत पारी प्रारंभ में खेली, थोड़ा अपने आप को स्थापित किया, एडजस्ट किया कंडीशंस में, और फिर जाकर के अब खुलकर स्ट्रोक ले रहे हैं क्योंकि अब विकेट का उतना ज्यादा महत्व नहीं है। 7 विकेट सुरक्षित हैं अथवास के पास। 138 पे 3। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, आवश्यकता के गलियारे में, पर थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर। लाइन और लेंथ पे नियंत्रण पूरी तरह से। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। अंतिम गेंद पर रन नहीं। ओवर की समाप्ति 17 समाप्त। 138 पे 3 अथवास इंडिया। और खूबसूरत बेहतरीन गेंदबाजी ओविस बाबा द्वारा। हालांकि इस ओवर में कुछ रन जरूर उन्हें खर्चे, एक छक्का उनके विरुद्ध जरूर आया, पर कुल मिलाकर 3 ओवर में 17 उन्होंने खर्चे, विकेट उन्हें मिला नहीं। और अनुशासन बहुत बेहतर उनकी गेंदबाजी रही है। 3 में 17, 17 समाप्त। 138 पे 3। Nasir 35. Dikshant finding his form in today's game, 69 of 50. Dikshant knows that the next game, that's going to be the quarter-final, no excuses are going to be entertained in the next game. You have to find a way to score runs, a better side, and he scored runs 69. It's come off 50 balls against Sopore Stallions. 3 overs remaining. Current rate is 8.1 to an over. Mujtaba 3 overs, all 3 were nice and tight. Just 20 of his 3. Shuffle from Dikshant. Aerial he goes. And that one is going to run down to the third man. He's going to take it. And with that boundary, there is addition to the tally. It's 142 for 3. And Dikshant gets 4 for that. Trying to punch it. It flies over the slip cordon, eluding everyone there. Look at that. It was back of the length. Back of a length, and he decided to go at it. As he exposed his leg stump there, and he shuffled across. He shuffled us across earlier on. Even Mujtaba knew that. He looked at the batter. He did that shuffle across. Still he bowled it there. Not getting that extra bounce this time round. 73 of 51. Now into the block hole. Yorks him on that occasion. Beautiful Yorker. And Dikshant is on to the other end now. Can't pick that. Misread it completely. Into the block hole was an easy one to keep it away. It's the bowler who blocked him. And it channeled there. Not able to flick that one. He was trying to keep it away. Just trying to help it away on its way. Gets hit on the pad. 143 for 3. Mujtaba, he's going to finish his quota here. He's in his final over. 3.2. Wicketless. Nasir. Well, Nasir knows what he was trying to do. Knelt it down on knee, going for that sweep against the likes of Mujtaba Yusuf is never easy. Who's bowling at good pace. And that one, it was again at a rapid pace. But Nasir against the runner play, trying to bring in that conventional sweep shot. That didn't work. He knows that the either side of the pitch, these boundaries are shorter. The shorter dimensions offside and onside here. Now that one, it was a fiery one outside off. He fired it.
but that was way outside off, called as a wide. 2 extras added. And with those 2 extras, there is addition in score. It's 145 for 3. He has to reload and re-bowl that one again. And that is going to put little amount of pressure. And he's going to be under pump for a while. What will he do now? As Dikshant sends first ball to the boundary. Dikshant will continue his dominance here. He will try to be dominant. On the other side, Mujtaba has to find a ball that is going to keep Dikshant under pump. That one flies. What a connection. That's aerial. And it's out of here again. Humongous of the bat of Dikshant Kundal. Kundal is finding his prime form back. That too when his team needed. And this is good sign for Athwas India 11. The next game is going to be the quarter-final. And Dikshant is back into the form. There was an opportunity earlier on that gone down. Asif Ramzan unable to hold on to the ball. And that brings a 150 for Athwas India 11. Once again, aerial he goes. There is a man. It dropped short of Sumit Kumar. And that single takes it to 152. This over 6, 7, 8, 9, 13. And that single makes it 14 of 4 balls. 5 balls, 14 runs coming in this over. Overall, he's gone for 33. And that 6 disturbed his figures for a while. And now he is gone for 33. The last ball of his spell. Lone Nasir to face the likes of Mujtaba here. There is a man at fly slip. Beaten on that occasion. He surprised it. And that did surprise the batter. 18 gone. It's 152 for 3. At one stage, we're talking about that. If they finish around 150, they will be extremely happy. There are still 2 more overs to come. 7 of the batters in kitty. They have all the license now. And look at Dikshant. He has improved now. He's on to 18 or 54 balls. There is a certain change again. And he has made everyone around the center feel that. And everyone is feeling that. His presence. And now he's on to 80 or 54 balls. From 47 to 54th. In a space of 7 or 6 balls, he has scored 20 plus. And making it to the 80s now of 54 balls. That's the change. And that's called the conversion. Now this looks substantial one. He has done that in style here. It's 19th over of inning number 1. Baba lost his run up. He's gone for 17 of his 3 overs. Mujtaba conceded 20 of his 3, but that over, the last over, gone for plenty. 14 of that. What Baba is gonna do now? 18 समाप्त 152. 3 विकेट्स पे 7 सुरक्षित. दीक्षांत 80 पे 54 के दूसरे और लोन नासिर ने 35 बनाए. और पिछले 3 ओवर में 39 रन आए हैं. 152. 3 विकेट पे 19वें की शुरुआत. सामने दीक्षांत 80 पे. और ओवैस बाबा आखिरी ओवर अपने कोटे का लेकर के पहली गेंद. अच्छी गेंद थी. पड़ने के बाद अंदर की तरफ पर खूबसूरती के साथ उसको ऑफ साइड में वहां पर 2 खिलाड़ी आपस में टकराए जरूर, पर सिंगल पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने. 1 रन और खाते में. 153. 3 विकेट पे 18.1 के बाद अथवास इंडिया 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब के विरुद्ध इस 18वें मुकाबले में जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकेंड एडिशन presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. लोन नासिर सामने. 153 पे 3. 19वां ओवर. ओवैस बाबा. ओवैस बाहर ऑफ साइड में हवा में गई है गेंद, पर पीछे खिलाड़ी है नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ यहां पर लोन नासिर को. और इस चौके के साथ उनकी व्यक्तिगत रन संख्या 39 पहुंच चुकी है. कुल रन संख्या अथवास इंडिया 11 की 157. ऑप्शन से थोड़ा बाहर थी ये गेंद. जगह मिल गई थी स्ट्रोक खेलने की. और परवेज रसूल के भाई और गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर. ये चौका मिला. बाबा खुश नहीं है इस स्ट्रोक से, पर ये 4 जरूर निश्चित तौर पे एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर. 157 पे 3. 18.2. 5 रन 2 गेंदों से खर्च किए हैं अब तक बाबा ने इस ओवर में. 29 गेंदों से लोन नासिर. एक बेहतरीन शानदार आकर्षक पारी खेली है आज अपनी टीम के लिए लोन नासिर ने.
इस बार फिर थोड़ा शफल किए थे ऑफ स्टंप की और ऑन साइड में मारना चाहते थे, पर संपर्क नहीं हुआ। तेज गेंद थी, गति का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हुए इस बाबा। 3 गेंदों से 5 रन आए हैं इस ओवर में और 3.3 ओवर में 22 रन खर्चे हैं बाबा ने। अनुशासन जरूर, पहनापन जरूर, वो किफायतीपन भी, क्योंकि 3 गेंदें इस ओवर की शेष हैं। ये 19वां ओवर 18.3 के बाद 157 पे 3, 39 लोन नासिर और कुंडल 19 रन दूर हैं अपने शतक से। क्या वो यहाँ शतक पूरा कर पाएंगे, ये देखना होगा। हालांकि 3 गेंदें इस ओवर की, उसके बाद फिर आखिरी ओवर। इस पर लेग साइड में खूबसूरती के साथ गैप में धकेल दिया और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका, 4 रन और खाते में और 4 रनों के साथ ही रन संख्या में वृद्धि है। रन संख्या 161। लेग स्टंप पर हर 4 बटोर लिए, 4 रन और खाते में। 43 पर पहुंच गए लोन नासिर। 161 पे 3, 18.4, 7 रन दूर अपने अर्धशतक से लोन नासिर और वहीं पे 19 रन पीछे हैं दीक्षांत कुंडल अपने शतक से। हालांकि इस प्रतियोगिता में अब तक के अगर हम 17 मुकाबलों की बात करें तो मात्र 1 शतक आया है साहिल शफी के बल्ले से, यूनाइटेड इंपोर्ट्स के वो खिलाड़ी, और मात्र एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने शतक पूरा किया है इस प्रतियोगिता में। लोन नासिर सामने 43 पे 161। इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक सामने की और एक टिप्पा, गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका, ये तीसरा चौका इस ओवर में। 47 पे 32 गेंदों से लोन नासिर। 165 19वें ओवर में कुल रन संख्या इस समय अथवास इंडिया की। और इस ओवर में अच्छे खासे रन बटोरे हैं। ऑप्शन से थोड़ा बाहर दिए गेंद, फ्लैट बैटेड स्ट्रोक खूबसूरती के साथ चौका बटोर लिया। 4 और खाते हुए 165 पे 3, 18.5 के बाद अंतिम गेंद खाना बाकी। 47 पे 3 चौके 1 सिंगल, 13 रन आ चुके हैं ओवर से। अंतिम गेंद खाना बाकी और 3.5 में 30 रन अब खर्चे हैं। वो पहले 3 ओवर अच्छे गए थे, 17 मात्र खर्चे थे, पर इस ओवर में 13 रन। और एक बार फिर शफल किया था, फिर ऑफ स्टंप पर और वहां से लपेट कर ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। असफल रहा। ओवर की समाप्ति 19 पूरे 165 पे 3 अथवास इंडिया 11। लोन नासिर 47 पे, पर दीक्षांत कुंडल होंगे सामने 81 पे। आखिरी ओवर 19 रन पीछे शतक से, पर सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वता इस पारी की, एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर कर दिया है टीम अथवास इंडिया को दीक्षांत कुंडल और नासिर ने। And the last 4 overs yielded 52. And so you can understand that what kind of a change we have seen, what kind of a change these two brought about. It's been that class and the resilience. That's why we call it resilience, class. And it's meeting with that aggression. Look, it's 3 for 165 now. They were 113 around that 15th over. And now we have seen that drastic change. 52 coming up last 4 overs. And a catch gone down in between. That was of Dikshant Kundal, put down by Asif Ramzan, the wicketkeeper. Dikshant first ball keeps it away. Ankit Narwal is going to bowl the final over. The first ball is kept away. 1 run taken, and with that, Lone Nasser is going to be on strike. He's on 47, just 3 needed to complete his 50 here. Dikshant scored 82. Nasser trying to improvise in between. Didn't succeed. What will he do now? Is he going to get some success here? Is it going to be a substantial contribution in the final over? He has contributed invaluable 47 already. This is over number 20. The last over of inning number 1. Ankit again. 2.1. None for 26. And with that aerial shot, is he in danger? Sumit lost the way. Baba dropped it. And Sumit is there to cover it up. Just a single. Moves to 48. He had to complete his 50. 4 balls remaining. Athwas India 11.
Moves to 167 now. 4 balls are gonna come. Dikshant 82, 18 away. 3 big shots. Is he gonna do that? He need a kind of tide. He need that ferocity with the bat. Is Dikshant Kundal gonna get there? Will he get there? Will he bring up his 100? Only the time will tell us. 4 balls are gonna come. Dikshant is gonna look aggressive here. Nothing to lose. 82 of 56. Will he attack? Will he go after? Ankit Narwal here. 167 already on the board. Fresh ball, that's a beauty, but it's down the leg side. He lost control over that one. It was fired in, but all of a sudden it lost control. It goes down the leg side. That means an extra ball is coming up. Now Ankit all of a sudden generating pace, but can't control it, can't keep it within the line. It didn't hold up a bit. It goes outside leg. Here is Ankit again. Dikshant just 18 away. Dikshant will be eyeing. There is nothing to give away. So he is gonna take him on. Now that one trying to launch it. Doesn't middle it properly, but nonetheless will pick up one. That's equally important. Runs should come. And runs keep coming. 168 for 3. Nasir need 2 more runs. Is this the ball? He's going to look forward to his 50. Will he bring up his 50 here? That's going to be another milestone in today's game. The one has already done that. He's on 83 of 57 balls. Playing some of the incredible shots. And we have seen that slippery to touch in between. If you were cracking. And that one, it's wide of the off. Nasir doesn't middle it properly. He's going to wait for the next ball to bring up his 50 here. Lone Nasir, 48 of 35 balls. Excellent delivery there. Important one. That is a dot delivery. Nasir. He's looking clueless for a while. What can he do now? He knows that how important that dot is. Will he go after? Will he break free? Boundary riders are all set on their toes. This is the ball number 5. This time wraps him on pad into the block hole. Yorks him on that occasion. Beautiful yorker. Perfect one. Leg by signaled. And Ankit produces that beauty of a delivery. And Nasir will remain on 48 of 36. The last ball of inning number 1 is coming up. Dikshant 83. Can't get to his 100 here. And if he gets big, that will take him to 89. If he gets 4, that will take him to 87. On the other side, Ankit will try to chip in with another one here. Are we in for another yorker? Will he produce that? What will he do? Is he going to look for yorker again? It isn't easy to produce yorker after yorker. You got to be specialist. There is little adjustment in the field. Man at sweep of cover is asked to stay around that extra cover boundary. Now Parvez Rasool, the captain of the side, is going to come around that cover point area to cover up that shot. Dikshant is loving that square drive. The last ball of inning number 1. 170 already on the board. The final ball. Dikshant hits that one. It's a fumble by the man at long off. Gonna be runs. And it's the confirmation is yet to come. But there is a round of applause for Dikshant Kundal in their dugout. And they know that how important these runs are going to be. Is it a 6 or a 4? That remains to be seen. If it is a boundary, then he's on to 87. If it is a 6, then he's going to move on to 89. And that will take the side to 6, 176. If 4, then it's going to 174. Look at the smile back on their face. And the two batters finding that form. It's a 4. And that means they finish on 174. 175 is going to be the target for Stallions to win this one. We shall be back in a while with the chase. Join us then. Assalamu alaikum and fi amanillah.
Assalamu alaikum, good afternoon, and warm welcome to Run Chase. 175 to get. Sopore Stallions, they need to prove their mettle in today's game. 175 is never going to be easy. It will take a character and some doing. The two openers to make those 175 out in the middle. And I got Nazir in the combox. Your comments, what you make of it? अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सभी व्यूवर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और रेड एफएम जेके के माध्यम से दूसरी पारी लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित 175 20 ओवर में 10 विकेट हाथ में सोपोर स्टैलियंस। पिछला मुकाबला हार करके आए हैं, पर यहाँ जीत अर्जित करनी आवश्यक। ऐसे में आदिल काचुरा इस टीम का हिस्सा नहीं है, चोटिल है, तो उनका स्थान आज इस टीम में पक्का हुआ नहीं है, पर वहाँ अरबाज नज़ीर का चयन किया गया है टीम में। पर यहाँ प्रारंभिक छोड़ी संभवतः आसिफ रसूल नजर आ रहे हैं, और उनके साथ दूसरे छोड़ से क्या अंकित नरवाल का इस्तेमाल किया गया है। ये प्रारंभिक जोड़ी हो गई, पर लक्ष्य की बात करें 175, हालांकि आसान रहने वाला नहीं है, एक चुनौती रहने वाली है, क्योंकि गेंदबाजी की अगर हम बात करें जहां आपके पास लोन नासिर है, उसके अलावा अन्य दीगर गेंदबाजों की बात करें तो कुछ बेहतरीन गेंदबाज आपकी टीम का, इरफानुल हक टीम का हिस्सा है, वो अच्छे गेंदबाज हैं। तौफीक आज़ाद एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, और कुछ अन्य दीगर गेंदबाजों की बात करें तो आपके पास गेंदबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं, और एक एक्सपीरियंस साइड है। अगर अथवास की बात करें, एक चुनौती जरूर देने वाली है, पर क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। अब बेहतर शुरुआत चाहिए, और शुरुआती जो ओवर्स होंगे, पावर प्ले जो पहला रहेगा, उसमें आपको बेहतर बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि पहला पावर प्ले काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। आप सुरक्षित निकाल लेते हैं और 6-7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हैं, तो फिर एक ठोस शुरुआत के चलते आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पर कुल मिलाकर कहना चाहिए एक कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा गेंद और बल्ले के बीच। फिलहाल शुरुआत होती हुई दूसरी पारी की, और ऐसे में दो प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके। 175 चाहिए जीत के लिए। गेंदबाजी की तैयारी दूर वाले छोर से, गेंदबाजी का दायित्व इस समय नासिर लोन शुरुआत करने जा रहे हैं गेंदबाजी में। तेज गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज, अच्छा खासा अनुभव। अंकित नरवाल और आसिफ रसूल का चयन किया गया है प्रारंभ में। 8.75 प्रारंभ में रिक्वायर्ड रन रेट। लोन नासिर करेंगे शुरुआत गेंदबाजी में, अंकित नरवाल होंगे सामने। हालांकि पिछले 2 मुकाबलों में अंकित नरवाल का बल्ला खामोश रहा है, और आज जहां इस बड़े मुकाबले में अथवास के विरुद्ध प्रदर्शन करना जरूरी, और यहां लेट्स प्ले का निर्णय दूसरी पारी में। पहली गेंद लेकर के तैयार नासिर लोन। पहली गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के पास देखा बाला, वहां पर बल्लेबाज अंकित नरवाल ने, और जाने पर दिया विकेट कीपर के लिए। और जानते हैं कि शुरुआती ओवर्स काफी महत्व, थोड़ा सा संयम, आत्मविश्वास, तो समय लेना होगा विकेट को परखने में, और उसके बाद बेहतर तरीके से गेंद की मेरिट के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि 175 तक पहुंचना सोपोर स्टालियन को आसान रहने वाला नहीं है इस मुकाबले में। मनवर, आपका भी स्वागत है इस दूसरी पारी में। Well, it has been high and dry for batter Ankit Narwal in the tournament. 2 outings, couldn't score, couldn't flourish. Here is another opportunity. Good delivery, right on money again. There is pounce on offer. Talking about Ankit Narwal. The man is yet to find his form here. And it's the better time to find his form before that big stage. That's going to the quarter-final coming up, and where you have to be at your best. Chasing 175. Ankit yet to get up the mark. The first one that was outswing, the next one around the gulling spot, then there was bounce on offer. Here is Nasir again. Good delivery, wraps him on pad, shot for LBW and is turned down straight away. Ravi Kumar Charesyan mood. No problem there, he gets away with that one. Ankit Narwal. Watch this, what he was looking for there. And that one hitting him around that knee roll, and just over that. Look, he's pleading before him, but telling him, oh, come on, look into this one. Have a say, have a say. He says, I'm not going to say a word. I'm not going to utter a word. I'm going to walk away. He decided to walk away, and umpire, they're walking away a little bit onto that other portion, so no problem at all. It's none for none. Ankit Narwal having some tough days in the middle. Here is Nasir again.
This time trying to flourish, trying to put that one away. Shaping for that punch is beaten again. It's the fourth dot on the trot. Dot number 4. Successive dots from Lone Nasir. Batted for 48 and played that crucial part allowed and helped Dikshant Kundal to set the tone, and he was running away with the scorecard. And now it's the high time for the two batters to put on a show here with bat. Ankit yet to find that middle of the bat. He's yet to lay bat onto the ball. That one, that was again moving, but this time he connected that shot. He's off the mark with that single solitary run, and it is Sopore Stallions underway. They are going off to 175 Athwas India 11. It's 1 for none, and finally he's off the mark. It was little surprise from Lone Nasir, and Ankit, he was clueless there. He was speechless at times. Now he gets off the mark. पहला रन खाते में यहाँ सोपोर स्टैलियंस के एक बगैर नुकसान के, और अब पहली बार आसिफ रसूल अनुभवी खिलाड़ी सामने आज बल्लेबाजी में प्रारंभ के लिए भेजा गया है अंकित नरवाल के साथ आसिफ रसूल को। लोन नासिर आखिरी बार इस ओवर में आसिफ रसूल के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ, खूबसूरती के साथ ऑफ साइड में गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने पर दिया। ऑफ साइड में गेंद चली गई, फील्ड हुई, आखिरी गेंद पर रन नहीं, सफल ओवर। मात्र एक ही रन आया इस ओवर से, और लोन नासिर बहुत बेहतर गेंदबाजी, अनुशासन इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक की अगर हम बात करें, और एक मुकाबले में उन्होंने लगातार 2 ओवर मेडन ओवर फेंके थे। वो क्षमता उनमें गेंदबाजी की, एक सटीक, एक सतर्क लाइन के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण बहुत बढ़िया रहता है। कमाल के गेंदबाज हैं। पहले ओवर में 1 रन खर्चा सोपोर स्टैलियन 175 बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, और पहले ओवर में 1 रन आया है। आसिफ रसूल 0 पे, अंकित नरवाल ने 5 गेंदें खेली हैं, 1 रन बनाया है। अच्छी खासी धूप, और हालांकि उतनी ज़्यादा मात्रा में भी दर्शक है नहीं, जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ेगा और अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध रह सकते हैं, क्योंकि एक और मुकाबला वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है। दोनों टीमों के लिए महत्वता है इस मुकाबले की, क्योंकि ग्लोबल डडू टाइटन्स का मुकाबला द रियल सुल्तान समर बुक के साथ आज शाम 6:30 बजे लाइव प्रसारण में आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस मुकाबले को। वर्तमान में दूसरी पारी 175 चाहिए अथवास इंडिया 11 के विरुद्ध सोपोर स्टैलियंस की टीम को। अंकित नरवाल सामने 1 पे, दूर वाले छोर से इरफान उल हक, एक और तेज गेंदबाज, वो करेंगे गेंदबाजी इस छोर से नॉर्दर्न पवेलियन एंड से। देखना होगा, एक साझेदारी की आवश्यकता, एक पार्टनरशिप की आवश्यकता नरवाल और आसिफ रसूल को, क्योंकि शुरुआत में आपको विकेट सुरक्षित रखने ज़रूरी, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि जितना आप विकेट सुरक्षित रख पाएंगे उतना दबाव से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं। एक बगैर नुकसान के इरफान उल हक पहली बार इस पारी में लेग स्टंप की शेप में, और गेंद को निकाल दिया सीधे वहां बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है गेंद 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका, 4 और खाते में आते हुए, और 4 रनों के साथ रन संख्या 5 बगैर नुकसान के। पहली गेंद पर चौका, हालांकि थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टंप की ओर आ रही थी ये गेंद, ऐसे में वह चौका बटोर लिया बल्लेबाज ने। 4 और खाते में 5 सोपोर स्टैलियंस बगैर किसी नुकसान के। अंकित नरवाल 5 पे 6 गेंदों से, इरफान उल हक पहली गेंद पर चौका, अच्छी खासी गति, अनुभव उनके पास, एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करने, नियंत्रण दिखाना, अनुशासन दिखाना, और उस लय में जिसके लिए वे जाने जाते हैं उस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता इरफान उल हक को। अंकित नरवाल सामने 5, और निश्चित तौर पे वहाँ थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर साइड स्क्रीन पे, और ऐसे में हलचल दिखाई दी और अपने आप को वहाँ अलग कर लिया बल्लेबाज ने, और अब वापस इरफान उल हक एक बार फिर, और कहीं ना कहीं आमतौर पर देखा गया है कि वो गेंदबाज की जो लय होती है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पे इरफान उल हक 5 बगैर नुकसान के। दूसरा ओवर, सोपोर स्टैलियंस 5, एक चौका अभी तक अंकित नरवाल के बल्ले से। नरवाल को एक बेहतर पारी खेलने की आवश्यकता, फॉर्म में लौटने की आवश्यकता। एक और खूबसूरत शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक और चौका मिलता हुआ नरवाल को। नरवाल 9 पर पहुंच गए, कुल रन संख्या स्टैलियंस की 9। अंकित नरवाल पिछले कुछ मुकाबलों में ज़्यादा योगदान दे नहीं पाए हैं, पर इस मुकाबले में
जैसे कि पिछली पारी में हमने देखा दीक्षांत कुंडल उस फॉर्म में लौटे, वो कमाल का स्ट्रोक था, अतिरिक्त उछाल था, पर पड़ा उसको सही आत्मविश्वास के साथ और अपने आप को संतुलित करते हुए गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और निर्वाल का फॉर्म में लौटना सोपोर स्टैलियंस के लिए काफी जरूरी। Good thing. If he gets that form back, will he find his form back here? Found 2 boundaries in an over. The second one, that was nicely played. 9 without loss this time. Right behind and nudges it away to onside. Into the double figure Stallions, chasing 175. Nerval finally finding that middle of the bat. The one which gone past to the short fine leg down to the boundary. The next one, that was slash in a flash. As he gone after that one and getting invaluable 4 runs there. Asif Rasool is marking the fresh guard. Irfan has got pace, bounce. And will that tease, will that annoy the batter? That remains to be seen. Let's see how he's gonna operate now against Asif Rasool. Asif once again is beaten comprehensively on that occasion. It's a dot delivery, and that will build his confidence, that will boost his confidence, and that is gonna give him something that will help him to adjust here. Well, a dot ball is precious, that too in the power play when restrictions are on and you're just 2 men outside, 30-yard patrolling. You don't have too much to cover up, and batters have all the freedom. 10 for none. Once again he's trying to hit the deck hard, eyeing that ball will climb. He's gonna make the ball climb around that rib cage or the head high, and there isn't too much bounce as of now. In between there is that the odd one which is climbing, which hurries onto the batter, and we have seen that batters are unable to anticipate likewise because of that abrupt bounce or the too pacey at times. This is the second over. Irfan has conceded 9 of his 5. And that one, there is production. Oh, there is a fumble. He has made mess of that. That's going to be 4 runs. And with that boundary, Asif Rasool is up the mark with the boundary there. He opened his account. It's gone through. Fielder there, it does well. Flicked away. And look at the fielder. He feels lost on that portion of short fine. And that boundary ends the second over on a high here. That's what Stallions needed. 14 for the loss of no wicket. Irfan gone for 13. Nasir Lone conceded just a solitary single of his first over. He's shown that temperament, bowled in the right areas, and Ankit has nothing in his favour there, as he was eyeing some of the balls where he could flourish. Nasir denied him any chance there. He didn't let him flourish and posed a kind of threat and did trouble him a bit. But this is going to be over number 3, and Nasir back to bowl his second and overall over number 3. Stallions need a good start up front. Wide of the off, trying to chase it down, and is beaten again. Knelt it down on one knee. I think there was a late swing and off at the way a batter tried to chase it. Or was that miscalculation? Is he batting outside the line of leg? It's 14 without loss. And Nasir surprised him again with the first one there. He's got a slip in. He's got a third man at a backward a point and straightish point in place. That one undriven. Drives the ball but finds his man at mid on. Not for runs.
There is a fielder who does well to stop the ball and denied any possibility. The dots will bring pressure on batters. And Ankit, he has gone through tough days. We have seen 2 outings where he could hardly flourish, as he lost his wicket early twice in the tournament. I thought it out earlier on that this lad failed twice, and this is the high time to recover. 14 without loss. Nasir. This time he punched it. Unable to go past to the man at mid-off. Bright sunshine. Little attendance here. Hot and humid climate. But the beauty, we can also say that how the beauty of the center, those colorful flags waving around the center, that gentle breeze adds to its beauty and makes it so nice and pleasing this afternoon here. 14 without loss. This is the third one. And Nasir is yet to concede a boundary, and is played on here. And Ankit Narwal is played on, dragged on. This is second time he's gone in the form of played on. And Stallions are 1 down. And Ankit Narwal is on his way back to pavilion. Look, Asif Rasool is telling him that it was better to lift it up. Look what you were doing. You were waiting for that one to rise. You were unable to adjust. It was better to lift it up over the man at mid-off or the mid-on. But you waited with that high back lift and going with a different kind of a shot. You allowed the ball to come at you or come into a batter there. And with that, that is the end of Ankit Narwal. Stay in the middle. Asif Ramzan comes in at number 3. Scored invaluable 46 yesterday. What can he do now? As Stallions need someone who can anchor the innings. Partnership is required at the moment. Well, that wicket of Ankit Narwal is going to bring certain amount of pressure. And let's see how the newcomer will adjust here. What will he do now? The conditions are okay or fine. The wicket isn't that much bad. Where we saw 174 coming in number 1. Ankit Narwal, who was unable to middle. He found it tough to bat on. Got 2 boundaries in an over from Irfanul Haq, who bowled too many short of length deliveries, and one that was outside the off, which was easy one. The one that was around that waist high, where he just directed the ball, given that delivery a direction. Lone Nasir is posing a threat. He has got that potential, the ability. He will make batters toil hard. Looks like at the moment, as he has drawn the blood, the first one. He has paved the way, has opened the gate for Athwas India 11, scoring invaluable 48 with bat. Oh, look at that one. That was the in-swinging one for the left-hander. And Asif Ramzan somehow keeps it away. Asif is a batter of that caliber and class. Look, try to unsettle him equally to the task, and keeps it to scare on the on. Nice block, gentle block from Asif Ramzan. Nasir is bowling really well here. He has that line and length which will tease and annoy. That's a quality of a shot again. But that's a right answer. The one who was teasing, who was troubling the batters. And Asif Ramzan has decided to come up with a wonderful scare drive and gets 4 for that. Open at the bat face and given it a direction. Gets 4 for that. A wonderful shot. And Nasir Lone, the way he bowled in 2 overs, just 5 from
His 2 overs and he's picked up wicket of Ankit Narwal. The danger man is sent packing. Once again, falling cheaply. But Nasir, he was threatening. He bowled 2 tight overs. I still remember, didn't got the ball in the first game. He was brought later on. And it's why captain learned the lesson. Given him the ball in the second game. And from second till today, he has been impressive with the ball. And one would like to admire his skills. And from our side, we will say, this lad has that potential, the ability to tease and annoy the batter, unsettle the batter. He has done well over the past couple of days. Even in today's game, he's bowled really well. Just 2 overs from lone Nasir. And he has picked up one of the batters and gone for just 5. That is showing the commitment and the resilience of bowler there. That is telling the entire story. How difficult it has been for batters to find that middle of the bat when Nasir is operating with the ball. He's troubling them time and again. And those who want to be physically here, those who want to watch the game of cricket inside the premises of Bakshi Stadium, log on to www.district.in and avail the ticket there. Be right here. 1 for 18. Bad line. Easy pickings. Good shot top the bat of Asif Rasool. He needs no second invitation, as Asif Rasool has given it away. And with that 4, there is addition to the tally. Irfan has got the pace, but he's yet to impress anyone here. And batters are finding a way where they can score against the likes of Irfan. Irfan has got that pace. He's got the bounce and carry nice. But the batters are finding a way. He's yet to adjust, and Mendy's line is here. That one, it wasn't the appropriate line for the bowler like Irfan. Right now, he's an express bowler for his team. Nasir on one end is keeping things tight. He's putting pressure on batters. He's kept batters under check. He's denying any freebie. On the other side, runs are coming. Runs keep coming. And that one again, there is extra bounce. He's got that wonderful bounce and carry. And look at Asif Rasool. Looking at the heavens. Doesn't connect that shot. Needed proper technique to rise and pounce on that one. Irfan has conceded 17 of his 1.3. Measure of runs coming against the likes of Irfan. Out of 22, 17 of Irfan. He's got a good run up, tall, lanky. That's again a good shot. There is a man. Will he get to the ball? Unable to stop the ball. Can't prevent it. That's 4 again. Into the mid-wicket boundary. Pulled that one. And pulled well. Watch it again. Oh, it's a half tracker. And it's a no ball. That's going to add an insult to an injury. He need to compound his agony here. What he's doing. But look at that connection from Asif Rasool, as he has given it a proper way and direction and dispatched it for 4. No ball means free hit coming up. It's 27 for 1. Asif is having some issues. What he's looking for? He's telling something. Now he's getting ready to face the next one. Here is an opportunity. Is he going to cash on? What will he do? Are we in for a big shot? And there is a kind of rivalry between Irfan and Asif Rasool. And he misread that one completely. And Asif Rasool, you can see that sadness on his face. He didn't connect that properly. Are they going to check it once again? Yes, Balwinder Kumar Soni says it's a no ball again. It's a freight coming up. Well, look at that one. It's a big no ball. There is a big daylight.
between popping crease and Irfan's foot there. It's well outside the crease there. So it's a no ball. 28 for 1. Asif has another opportunity. The first one gone bagging. Right now he's got the second one on the trot. What will he do now? Will he dispatch the ball to the boundary? 28 for 1. Irfan. This time he banged it in short. And Asif trying to hook it away. I think he is quite successful this time. The other one that gone, that opportunity gone bagging, unable to get anything out of that, but this time round he gets couple more. It's 30 for 1 as we are in over number 4. Irfan conceding 25. He's yet to complete his second over. No ball, no ball. 2 on the trot. Successive no balls. Back to back no balls from Irfan here. Athwas India 11 set 175 for Stallions. In response, they're 30 for 1. That's a good shot. Worked away nicely. Won't beat the man inside 30 yard there. It's a dot ball. It's a precious dot again. There is a little man fielding at the moment. He will get some encouragement. He's in place of someone else at the moment. He's as substitute out on the field. And these things will allow the young lads to get their exposure, where they can breathe free and enjoy that cricketing atmosphere. And will learn the tactics, the basics of the game. And that's how you can teach them. And they will learn a lesson. It's 30 for 1. The last time in this over, Irfan. Plenty of runs coming of Irfan. In this over we have seen 4, 8, then no ball 9, then a no ball. Makes it 10, 12. He's gone for plenty here. Now there is change in the field. He's going to bring fine leg in. And long off is going to drop down to the boundary. Last ball of over number 4, Irfan. To Asif Rasool. That's a beauty. That is a nice comeback. Asif Rasool unable to offer any shot. Just holding his bat inside the line. Let the ball pass. And so no problem there. It's 4 done. 30 for 1. They are chasing 175. The required rate has gone up to 9.06 and over. This is their dugout. And that is their owner, Amir, who's packing this club. He's got a good combination. One strong for this tournament. But all the big teams gone down to Royals in the tournament. That is telling that the Royals have got a good combination for the tournament. But Nazir, you know that what matters the most? How you execute your plans on a given day. The next game is going to be the quarter-final for Royals, and there it's going to be the game that they need to perform and come up with something special. 30 for 1 after 4. It's over to Nazir. थैंक यू, धन्यवाद. 4 के बाद 30 पे 1. आसिफ रसूल 14, आसिफ रमजान 4. ये साझेदारी नाबाद 2 बल्लेबाजों की. एक विकेट शुरुआत में. अंकित नरवाला इस बार फिर आज सस्ते में चले गए. कोई खास योगदान उनका नहीं रहा. ये तीसरा मुकाबला उनका और तीसरे मुकाबले में लगातार वो फेल हुए हैं. और कहीं ना कहीं आलोचनाएं में ज़रूर होंगे, वो टिप्पणी उन पे ज़रूर होगी. नेवर की शुरुआत, पहली गेंद खूबसूरती के साथ ड्राइव किया गैप में और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. चौका मिला यहाँ पर. जैसे ही देखा ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर की तरफ आ रही है गेंद, उस गेंद का पीछा ज़रूर किया बाएं हाथ के आसिफ रमजान ने. खूबसूरती के साथ गैप में प्लेसमेंट बढ़िया थी, लाजवाब तरीके से सामने की ओर और चौका बटोर लिया. 4 और खाते में. 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि. ये रन संख्या 34 एक विकेट पे. 4.1 ओवर की गेंदबाजी. आसिफ रमजान एक बेहतरीन बल्लेबाज है. यहाँ जो हमेशा हम जिक्र करते हैं, आत्मविश्वास दिखाना ज़रूरी है. संयम के साथ किसी भी दबाव में यहाँ बल्लेबाजी नहीं करनी होगी, क्योंकि एक बार आप दबाव में आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी बल्लेबाजी करना. एक और बेहतर
और खूबसूरत यहाँ पर गाइड किया था गेंद को, उस गति का इस्तेमाल किया था। फील्डर उस ओर तैनात थे, उनने गेंद को हालांकि सफाई के साथ फील्ड नहीं कर पाए, बैकअप पे दूसरे खिलाड़ी थे, उनने गेंद को फील्ड कर लिया, पर पहले फील्डर ने गेंद की गति को थोड़ा कम किया, उस स्ट्रोक की गति को कम किया। ऐसे में एक सिंगल मिला 35 पे 4.2। ये खूबसूरत समा और ये विजुअल्स कमाल के, ये लाजवाब है और ये क्रिकेट के प्रति उत्साह है। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि क्रिकेट एक खूबसूरत खेल है, क्रिकेट की अलग मान्यता है, क्रिकेट एक महान खेल है, ये खूबसूरत खेल है और क्रिकेट ओवरऑल देखा जाए तो क्रिकेट इज अबव ऑल। और निश्चित तौर पे एक बार फिर दर्शा दिया इस खूबसूरत खेल के प्रति आपका उत्साह, आपका जुनून। 35 एक विकेट पे 4.2। आसिफ रसूल 14 पे, सामने मुदस्सिर गेंदबाजी कर रहे हैं, मुदस्सिर अब्दुल्ला का इस्तेमाल किया गया है खूबसूरती के साथ कवर्स में। वहाँ पर हल्का सा फंबल हुआ, बैकअप पे खिलाड़ी तैनात हैं, वो गेंद को फील्ड तो कर लेंगे पर सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। पहला ओवर इसमें मुदस्सिर अब्दुल्ला का, पहली गेंद पर चौका, फिर सिंगल। 36 पे 1 4.3 के बाद ये रन संख्या इस समय। 5वें ओवर की गेंदबाजी सोपोर स्टैलियंस एक अच्छी स्थिति में, क्योंकि एक विकेट जरूर गंवाया अंकित नरवाल का, लेकिन आसिफ रमजान और आसिफ रसूल ने एक बेहतर साझेदारी निभाई है। तीसरे गेंदबाज का चयन किया गया है, नासिर लोन ने 2 ओवर की गेंदबाजी और उन्हें अपने आपको हटा करके उनके स्थान पर मुदस्सिर अब्दुल्ला का इस्तेमाल किया गया, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज। आसिफ रमजान खूबसूरत ड्राइव पर सीधे फील्डर के पास, अरे कलीम मलिक वहां पर तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक बार फिर रन नहीं मिलेगा। 9 पे आसिफ रमजान 6 गेंदों से 36 पे 1 4.4 के बाद मुदस्सिर का पहला ओवर। खूबसूरत और बेहतरीन क्रिकेट बख्शी स्टेडियम में जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकेंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब, ये लाइव प्रसारण आपका पहुंचा रहा है, साथ में रेड एफएम जेके। मुदस्सिर अब्दुल्ला एक और बेहतरीन स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक पर पीछे फील्डर तैनात। आसिफ रमजान बहुत बेहतर बल्लेबाजी, गेंद की मेरिट के हिसाब से ठीक गेंद के पीछे आ रहे हैं, गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं और गेंद की मेरिट के हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की और किसी भी प्रकार का अतिरिक्त जोखिम अभी तक उठाया नहीं है आसिफ रमजान और आसिफ रसूल ने। 37 पे 4.5। 5वां ओवर, ये दूसरी पारी। 175 बनाने हैं मैच जीतने के लिए टीम सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब को अथवास इंडिया 11 के विरुद्ध। दाएं हाथ के आसिफ रसूल सामने। 37 पे 1 4.5 के बाद, और ये बड़ा स्ट्रोक है, ये कनेक्शन सही है और ये गेंद भी सही जगह लैंड हुई है। एक और छक्का आसिफ रसूल के बल्ले में, और जब वेल लय में दिखेंगे तो फिर गेंद आपको स्टैंड्स में ही दिखेगी। कमाल का स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक था ये देख लीजिए, खूबसूरती के साथ बड़ा ताकत का इस्तेमाल किया और इस छक्के के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा आसिफ रसूल का, बल्कि सोपोर स्टैलियंस के खाते में 6 रन और जोड़े जाएंगे। 6 और खाते में। 43 पे 1 5 ओवर की गेंदबाजी। 21 पे आसिफ रसूल, आसिफ रमजान 10, और आसिफ रसूल भी पिछले 2 मुकाबले में उतना योगदान, हालांकि पिछले मुकाबले में उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी पर उससे पूर्व पहले मुकाबले में उनका उतना योगदान रहा नहीं था गुडविल के विरुद्ध। पर आज एक बार फिर इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, अच्छी पारी खेलनी होगी, योगदान अपना और वो जो दायित्व उनके कंधों पर है। आज ओपन करने आए थे अंकित नरवाल के साथ, हालांकि पिछले मुकाबले में हमने देखा वो नंबर 4-5 पे उतरे थे, पहले मुकाबले में नंबर 6-7 पे आए थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया है। जब उन्हें शुरुआत के लिए भेजा गया तो बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। 21 पे बाद चौथा गेंदों से 43 पे 1 5 के बाद छठे की शुरुआत। क्या दोहरा परिवर्तन होगा? मुदस्सिर अब्दुल्ला 1 ओवर 13 रन खर्चीले साबित हुए, कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए इस जोड़ी पे। यहाँ एक और परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, अथवा इरफानुल हक से ही गेंदबाजी होगी, क्योंकि 2 ओवर उनके इससे पूर्व और उनका भी कोई खास प्रभाव नहीं दिखा है। बहुत ही बेहतर गेंदबाज है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, उनके पास गति है और बेहतर गति का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ गति के साथ साथ सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी है, वो आक्रमण करना है, नियंत्रण करना है अपने गेंदबाजी में, और एक योजनाबद्ध तरीके से आपको गेंदबाजी करनी है। 43 एक विकेट पे 5 समाप्त, छठे की शुरुआत। एक बार फिर जी हाँ, इरफानुल हक अपना 30 ओवर लेकर के 2 ओवर 25 रन, उन्हें पहले ओवर में 13, दूसरे में 12, ये उनका तीसरा ओवर है। 43 पे 1 पहली गेंद देकर के नॉर्दर्न पवेलियन एंड से बाएं हाथ के आसिफ रमजान 10 पे सामने।
आसिफ रमज़ान ने बड़े आत्मविश्वास के साथ तिरछे बल्ले के उसको खेला ज़रूर था, पर उस ओर फील्डर तैनात थे। गेंद तौफीक आज़ाद के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक बार फिर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 43 पे एक, 6 ओवर की शुरुआत हो चुकी है और सोपोर स्टालियंस की टीम चाहेगी कि यहाँ से जीत अर्जित की जाए, या अवश्य जीत अर्जित करना, 2 अंक और प्राप्त करना। हालांकि आखिरी लीग मुकाबला उनका बचा है वो सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के साथ कल शाम 6 बजे। लाइव प्रसारण में आप जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। रेड एफएम जेके के माध्यम से भी वो लाइव प्रसारण, तो एक संघर्ष होगी और वो आखिरी लीग मुकाबला होगा पूल ए से। 43 पे 5.1 इरफान उल हक, नीचे रही थी गेंद पर खूबसूरती के साथ उसको खेला। एक सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाज, अच्छी रणनीति है। किसी भी अतिरिक्त जोखिम का प्रयास नहीं हो रहा है, किसी भी हड़पड़ाहट में नहीं है, बेहतर तरीके से साझेदारी को निभा रहे हैं। 8.32 प्रति ओवर के हिसाब से और 8.90 रिक्वायर्ड रन रेट। आपके पास विकेट सुरक्षित है तो आप फिर इन बिटवीन रन गति को उछाल दे सकते हैं, आप गियर बदल सकते हैं। पर जब आपके पास विकेट सुरक्षित, क्योंकि पिछली पारी में हमने देखा पहले 15 ओवर में 113 रन बने थे, फिर पारी 175 पे जा समाई। तो कुल मिलाकर अगर वहां से जिक्र करें 62 रन अगले 5 ओवर में आए, विकेट आपके हाथ में थे 7, और वही कार्य यहाँ पर। हालांकि आप दूसरी पारी में चेज कर रहे हैं, दबाव जरूर होगा, तो थोड़ा आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कीजिए यहाँ इन पहले ओवर्स में। 43 पे 1, नीचे रही गेंद, विकेट कीपर से चौकवे पर उपहार के रूप में चौका मिल जाएगा यहाँ सोपोर स्टैलियंस को। 4 और खाते में, और ये रन संख्या 47, 1 विकेट पे 6 ओवर में। गति का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और विकेट कीपर से हल्की सी चूक हुई। यहाँ देख लीजिए गेंद सीधे निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर, चौका मिल गया 4 और खाते में, और 4 रनों के साथ रन संख्या 47 सोपोर स्टैलियंस 1 विकेट पे। अंकित निर्वाल पिछले 3 मुकाबले, 2 मुकाबले और आज तीसरा मुकाबला, तीनों मुकाबलों में फेल हुए, कोई खास योगदान नहीं कर पाए हैं अपनी टीम के लिए। और कहीं ना कहीं एक बड़ी पारी की आवश्यकता थी और आज भी उन्होंने निराश किया अपने फैंस को, अपनी टीम को। पर एक बार फिर आसिफ रमजान और आसिफ रसूल पे दायित्व और बखूबी। अगर आसिफ रमजान की बात करें, बेहतरीन पारी उन्होंने पिछले मुकाबलों में भी खेली है और इस मुकाबले में भी आसिफ रसूल के साथ एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। 10 पे नवाद हैं, 7 गेंदों से 21-14 गेंदों से, रन संख्या 47, 1 विकेट पे। यह अब तक का लेखा जोखा। इरफान उल हक गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे में संभवतः यहाँ पर स्कोर टिकर जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है, शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ऐसे में विलंबता खेल में और सामने वाले छोर से अभी भी थोड़ी सी दिक्कत और विलंबता जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल 47 पे 5.2 के बाद। It's the last mandatory power play. There is a pause in play. Play stops. Play stops due to technical snag. And there is a problem in Crick Heroes. We're facing a technical snag in Crick Heroes app, which is updating the score of each and every match here at Red Premier League Season 2. The title sponsors of the tournament, JK Super Cement, presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Crick Heroes app is having some issues right now. The technical team is on job. They're working on it. And play stopped because of Crick Heroes problem. The two openers are getting hydrated. The two batters, sorry, correction comes in. The number 2 and number 3 are getting hydrated. They're in the middle. And on the other side, if we talk of Athwas, India 11, they are in a kind of hurdle. The match referee is having words with the two officials of the match. They are engaging in a discussion there. And look, this is the team of Athwas, India 11 in a hurdle on your screen right now. And you know that it is in our capacity, control when it comes to the online apps. And one is the Crick Heroes app,
the scoring app where we update .43 for 1 in 6th over, and all of a sudden Crick Heroes is down for a while. And let me tell you, there are a couple of big names in the Kashmir Valley who are promoting cricket and sport to their level best, to their fullest of the potential. One is Tajamul Saab, who's backing that Murad 7th Street Cricket Club, and he has been a force to reckon backing his club. And there are others too coming up with Sultan Warriors, Royal Goodwill. They are pretty much in the field nowadays. Short pause in play. Scorer is looking into this one. And may I remind you once again, it is the issue with the Crick Heroes app. The work is going on. The team is working on it. Team is working on it at the moment. 43 on the board with 1 wicket down. It is a big problem right now we're facing at the moment, and the match referee is in the middle. And the pause continues. It's going to prolong. In between, we're going to go through what happened earlier on inside 5.2. Here it is on your screen. It's back on track, luckily, and alhamdulillah, we're back again. It's 48 for 1. Crick Heroes app is working. It was down for a while. Now, luckily, it's back on track. It's working properly now. Hope it will carry on. 48 on the board. Irfan in his third. None for 26. Ajishwan playing inside the line of the ball of the outer splice, and it didn't carry. There were 2 men on that portion, a backward of scare on the off, falling in between, but short of the 2 men. They're 49 for 1. One chef team 50. Sopore Stallions. Asif Ramzan is on 11. He's anchoring. He has been a force which is pushing Asif Rasool. And Asif Rasool is going forward at the moment. And Asif Ramzan has given a space and a place where Asif Rasool can flourish. And he has given him the license that you have to go for big shots, and I will play my part to keep wickets intact from other end. That's my job. He's playing that second fiddle at the moment. Irfan lost his run-up. This is second time in today's game. He has lost his run-up. He has to go back to the top of his bowling mark. Stallions require 175. Going to be some total to chase today.
this afternoon with hot and humid conditions. Under the bleed blue skies, Irfan stands tall on that occasion, punches it away. But just a single on offer there. There wasn't enough power behind the shot. Just well, stands tall. It's 50 up for Sopore Stallions in pursuit of 175. They're 125 runs behind. And what could be the magical figure to touch? $50 for 1. One last time, the last ball of power play is coming up. Will Irfan keep a batter quit? A batter will break free. Let's see on this ball. Who will win the race? Who will prevail? One last time in his third over and overall, the last ball of power play is coming up. He has made some changes in the field. Now the man drops down to the square leg boundary. There is going to be short mid wicket in place. The little man is there. The man at mid on. There is no one at long off. Mid off is up inside. The last ball of power play, and Asif once again on his toes, guided it nicely. Field is about after the ball. Will he get to the ball? No way. Ball is going to win the race, and he rammed into that advertising hoardings there. Unable to stop the ball, not trying to hit hard, just placing the ball. Look at this one again. Oh, guided nicely with that angle blade. Nasir Lone showing some aggression, lost control over the ball. Look how he rammed into the advertising hoarding. Behind and beyond those boundary triangles. It's 54 for 1 after 6 overs. Hope he will be okay and fine. He's okay. He's back on the field. He's got one hand on his back. As he rammed into that, he met with that advertising hoarding. And there lies that strong and concrete wall. Hope he's fine and is standing again tall there. That's the good thing. That's the better part. 54 for 1 after 6 overs. Power play yielded 54. Sopore Stallions scoring 50 plus at the cost of one. Ankit Narwal once again gone on low score. Another game where he couldn't flourish. Another low scoring encounter. And a game for Ankit Narwal. His team wanted one big knock, one heck of an innings from Ankit. Unable to find that form, which he's struggling with the past couple of days. He's going through a kind of transition. We're into the 7th over. Ali Malik is given the ball. The first one, Asif Ramzan trying to guide it, run it down to the third man. And Alim has got no one inside onto that portion of third man. It's a vacant space. It's a big space over there. He's got a man at short third and backward a point. So strong there, Asif Ramzan. On drives it to mid-on area. Sometimes you need aggression and you need to be cautious in the meantime. But we saw in the last over that the final ball of power play gone for runs because aggression couldn't meet that cautious character and losing control over the ball. 55 for 1. This time trying to go big and couldn't impress the umpire there. Appealing for LBW and is turned down. Trying to flick it around the corner, Asif Rasool. He's on to 26 of 18. Alim. He's bowling really well here. Leg break baller, that one. He goes back and pulls it. Oh, he's dropped. A chance gone begging. Should have been taken. Asif Rasool says, okay, hold on. Asif Ramzan says it was better to hit it out of the park. Take a look again. Fetched it. Goes flat. Oh, should have been taken. It dropped. This one, that is a quality.
This time into the extra cover boundary. In a blink of an eye for 4, 59 for 1. Now Asif says, I misread the other one, don't worry. See this one where it is. And he's telling him that just take it easy. Cool a bit. Dude, don't be rude. Just take it easy and understand. We need you till the very last moment. A good shot over cover and into the extra cover boundary. 59 for 1. This is 7th over. Captain is having a word with bowler. What's going on? Let's see. What was going on? We shall come to know on this one. There is a man at long off. Now he's got 4 men outside, 5 men outside the 30 odd. This time he advances. Gives himself a charge. Little fumble. And he's going to look for 2. Asif Rasul looks calm. He has a different strategy in his mind. 61 to end the over number 7. A different batter altogether. Look at his physique and physical appearance. And his facial expression. Looks cool, calm in the middle. But the number of runs he scored, one will be surprised at how he gone on to 32. And he's racing away on onside. That's what Stallions need at the moment. That's what they require. And need to convert this one into a substantial one. The substantial figure will have its own impact and effect on the game. So let's see what he's going to do and what kind of strategy he's going to use in the coming overs. How he will strategize it. And in the bowling department, there is going to be another change. Aleem bowled his first over, gone for 7. Sopore, they are 1 for 61. साजिद का इस्तेमाल एक और परिवर्तन गेंदबाजी में अथवास इंडिया 11 द्वारा आसिफ रमजान 13 और आसिफ रसूल ने 32 रन बनाए हैं 21 गेंदों से। करंट रन रेट 8.71, रिक्वायर्ड रन रेट 8.77। 7 के बाद 61 पे 1। साजिद अब नई गेंदबाज देखना होगा क्या ये परिवर्तन रंग ला पाएगा अथवा नहीं, क्योंकि साजिद को पहली बार टीम में जगह मिली है। अगर अथवास इंडिया की बात करें जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग इस सेकंड एडिशन के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में पहली गेंद लेकर के अपने स्पेल की आसिफ रमजान के लिए खूबसूरती के साथ पुल किया और गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ। पहली गेंद पर साजिद का स्वागत आसिफ रमजान ने चौके से और सोपोर स्टैलियन की रनगति में वृद्धि होती हुई। बेहतरीन स्ट्रोक था, 4 अर्जित किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। फील्डर ने प्रयास किया जरूर था, वो असफल रहा और गेंद तब तक बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई थी। 65 पे 1, 7.1 ओवर की गेंदबाजी। 110 रन और चाहिए, 175 तक पहुंचना, 175 बनाने मैच जीतने के लिए 65 बने हैं। 1 विकेट पे 7.1 के बाद साजिद अगली बार एक बार फिर खेला जरूर और एक बार फिर गई गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 2 गेंदों से 2 चौके आसिफ रमजान के बल्ले से। और अब जाकर के जो दबाव है वो अपने आप से दूर जरूर छटा है दोनों बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की एक साझेदारी निभाई है। तो ऐसे में अब 2 गेंदों से 2 चौके और आत्मविश्वास बढ़ेगा एक बार फिर बल्लेबाज आसिफ रमजान और आसिफ रसूल का। आसिफ रमजान 21 पे 13 गेंदों से 69 पे 1, 7.2 मात्र ओवर की गेंदबाजी। 9.41 करंट रन रेट और रिकॉर्ड रन रेट अब गिरता हुआ 9 से नीचे 8.37 तक। इस बार फिर ऑफ साइड में ड्राइव किया, पीछे फील्डर रन के लिए दौड़े जरूर थे, पर जैसे ही देखा कि फील्डर उस और गेंद पे झपट्टा मार रहे हैं, वापस अपने कदम आसिफ रसूल ने खींचे सुरक्षित क्रीज में। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 69 पे 1, 8वें ओवर की गेंदबाजी। अच्छा क्रिकेट। 18वां मुकाबला इस जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन का, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल, लाइव प्रसारण साथ में रेड एफएम जेके। अगली गेंद एक और बेहतरीन स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद वहां पर सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। ये तीसरा चौका इस ओवर में साजिद के विरुद्ध। लगातार प्रहार इस गेंदबाज के विरुद्ध आसिफ रमजान द्वारा। खूबसूरत बेहतरीन और क्लीन हिटिंग इस ओवर में देखने को मिली है। 3 चौके अब तक लगाए आसिफ रमजान ने। 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में चौकों की मदद से। 3 चौकों की मदद से 4 गेंदों से 12 रन आए हैं। कुल रन संख्या 73, 1 विकेट के नुकसान पे 7.4। 8वां ओवर 73 रन 1 विकेट पे
25 पे आसिफ रमज़ान, आसिफ रसूल ने 32। तो ये पार्टनरशिप बहुत बढ़िया, क्योंकि अंकित नरवाल का विकेट शुरुआत में गंवाया था और वहाँ से फिर एक न सिर्फ एक साझेदारी बल्कि एक बेहतरीन स्थिति में ला खड़ा कर दिया। सीधे बल्ले से सामने की ओर खेला, जब तक लॉन्ग ऑन खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या 74 और अब 101 रन की आवश्यकता। पर इस साझेदारी ने कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा कर दिया। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद जब तक न फेंकी जाए आप अनुमान नहीं लगा सकते। पर जिस प्रकार की परिस्थितियों के अनुकूल अगर हम बात करें तो इस समय सोपोर स्टालियंस की टीम एक मजबूत स्थिति में। 74 पे 7.5, 8वां ओवर। अच्छी बल्लेबाजी, एक बेहतरीन और शानदार क्रिकेट देखने को मिला है। पहली पारी में 174 बनाए अथवास इंडिया ने, 175 रनों का लक्ष्य दिया है और अब तक 74 रन तक पहुंच चुके हैं। एक और बेहतर स्ट्रोक, 1 रन के लिए दौड़ पड़े। दूसरे की मांग है और जब तक इरफान उल हक थ्रो करते तो दिशाहीन थ्रो था, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अंतिम गेंद पर 2 ओवर से आए 15, 8 के बाद 76 पे 1 और अब 99 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8 ओवर की समाप्ति। It looked like the two batters were toying with Sajid in his first over. 15 of it. Big over. Plenty of it. I think this is an over they were looking. Now it's down to the double figures. 99 away from 72 balls. We're done with 8th one here. Asif Rasool and Asif Ramzan. The duo and their combo is really setting the tone and milking the ballers here. Asif Ramzan playing some quality shots on either side and pulling the ball. Standing tall, then going after ball. He gone thrice in an over and Sajid was unable to control that pull shot. And Aleem begins the fresh over from other end. There's a close in man at point. No run there. Good start again. A tight one here. Need to dry up runs. And that's the important thing here. This one, it really surprised. It could be tight. Not a clean start by Sajid. Where there wasn't a single. Asif Rasool is so quick. He's still fit. Running between the wickets. Another run we saw, he was walking all along. But this time he was so quick. In no time, before Sajid could turn around, he was there in the crease and telling him that don't worry, be safe, as I'm already in. 77 for 1, 98 more runs needed. The equation, it is 71 balls and 97 needed. And let's say 98 needed. Aleem in his second over. Oh, look at that shot, just over his head there. And delicate and deliberate. Asif Rasool not trying to hit out, just placed the ball, lifted up and is back for the second with ease. 79, going after that total of 175. And this pair is playing really well at the moment. They're middling the ball, they're timing the ball. Ones and doubles, singles and doubles are coming at will. Whenever they try to hit hard, whenever they try to go big, those big shots are also available. And the singles are coming. Singles kept coming. And singles are coming at free will. Whenever they look for ones, they are available there. 80 for 1. Oh, he's played on all of a sudden against the runner play, and Ali Malik, he has his man. He's played on the second one today. Playing close to the body. Allows the ball to come in. And trying to work it away. Not going with a straight bat. Look on that occasion. Look. Trying to work it away. It isn't working. And it worked for the bowler again. A wrong shot selection to me. Not a good ploy. But a much needed breakthrough for Athwas India 11. And a look at the boys from Athwas India 11. They needed that one badly. And it just pumped them up again. And Ali Malik provided that one. But this pair, they were just taking game away. They were pushing Athwas out of the game.
and they shown that grit and that resilience that was quite evident. 2 for 80 after 8.5. 80 पे 2 आसिफ रमजान ने एक बार फिर अपना विकेट गंवा बैठे। एक अच्छा स्टार्ट मिला था पर उस पारी को एक बड़ी पारी में परिवर्तित करना और वो संभव नहीं हो पाया और आउट होकर मैदान से बाहर। पर योगदान उनका बहुत बढ़िया रहा। एक अच्छी पारी खेली। साझेदारी की आवश्यकता अंकित नरवाल के आउट होने के बाद। अजीम काजी नए बल्लेबाज। अलीम मलिक को यह पहली सफलता 1.5 ओवर में 11 मात्र रन देकर के और इस ओवर में अभी तक उन्होंने 4 रन खर्चे, एक विकेट भी प्राप्त किया 5 गेंदों से। 80 पे 2। अभी भी 95 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8.51 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाना है यहां से टीम को, जो रिक्वायर्ड रन रेट है सोपोर स्टैलियंस का। 18वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनी स्टार पांपोरा में चैंपियनशिप फीस था एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बुखारा हमदान और डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब एचएनडी और उसके अलावा वैली फ्रेश गोल्ड। थैंक यू स्पॉन्सर्स व्यूअर्स अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। 80 पे 2 8.5। अलीम ओवर की आखिरी गेंद लेकर के पिछली गेंद पर विकेट की खुराक मिल चुकी है और इस बार सामने सीधे बल्ले से बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के अजीम काजी ने अंतिम गेंद पर रन नहीं आया। ओवर की समाप्ति 9 ओवर समाप्त हो चुके। 80 पे 2 8 विकेट सुरक्षित हैं। आत्मविश्वास दिखाइए, बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कीजिए। वो जो आपकी क्षमता, उस क्षमता के अनुकूल आप बल्लेबाजी कीजिए। खराब गेंदों को सही नसीहत देनी होगी। अच्छी गेंदों का सम्मान, एक रन से पारी को चलाना, 1 को 2 में कन्वर्ट करना। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जाइए, बल्लेबाजी कीजिए। जो आपकी क्षमता है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर बल्लेबाजी करेंगे आप, फिर ये रन चेज जो है आसानी के साथ पार किया जा सकता है क्योंकि 11 ओवर अभी शेष हैं। 66 गेंदों से 95 रन और सबसे महत्वपूर्ण बात 8 विकेट सुरक्षित हैं। आने वाले बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, दिग्गज खिलाड़ी, अभी भी अनुभवी खिलाड़ी डगआउट में बैठे हुए हैं। मात्र अंकित नरवाल जो कि पूरी तरह से असफल रहे हैं इस प्रतियोगिता में, चाहे वो पहला मुकाबला, दूसरा, फिर आज तीसरा। तो उसके अलावा आसिफ रमजान ने बेहतरीन पारियां पिछले मुकाबले में भी, इस मुकाबले में भी। और आसिफ रसूल ने भी आज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। 37 पे अभी भी नॉट आउट हैं 24 गेंदों से। अजीम काजी जो नए बल्लेबाज हैं, थोड़ा सा संयम आत्मविश्वास के साथ एक छोर पकड़ करके रखना होगा, एक छोर से सहयोग करना होगा और दूसरे छोर से आसिफ रसूल सेट है, वह जानते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। पर आसिफ रसूल को भी यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सुरक्षात्मक अंदाज से बल्लेबाजी करनी है क्योंकि विकेट ऐसा है जहाँ पे आप अनुमान नहीं लगा सकते। हालांकि एक गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ, एक अच्छी उपेक्षा उछाल के साथ और अगली गेंद बिल्कुल नीचे रह रही थी, तो ऐसे में ये जो विकेट का स्वभाव है ये तो बड़ा पढ़ पाना मुश्किल बल्लेबाजों के लिए। तो ऐसे में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। तौफीक आज़ाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक और स्पिन गेंदबाज, युवा गेंदबाज, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। क्या ये परिवर्तन रंग लाएगा? पहली गेंद पर खूबसूरत स्ट्रोक, पीछे फील्डर, रन जरूर मिलता हुआ। 1 रन और खाते में। 81 पे 2 9.1 ओवर की गेंदबाजी। आसिफ रसूल जानते हैं कि इन परिस्थितियों में कहां पे आपको अटैक करना है, किस गेंदबाज को आड़े हाथों लेना है, वो जानते हैं क्योंकि यहां से आस्किंग रेट जो है वो 8.68 का और इसको 10 से नीचे रखना जरूरी है। एक बार 11-12 तक पहुंच गए तो फिर मुश्किल चीज, क्योंकि वो आखिरी 5 ओवर जिसमें सोपोर स्टाइलियंस ने अच्छे खासे रन खर्चे थे। 15 ओवर में 113 और अगले 5 ओवर में 65 रन आए थे, 64 रन आए थे, क्षमा कीजिएगा। तो वो फिर 175 तक टीम पहुंच पाई। आखिरी 5 ओवर के वो 62 रन, वो अंतर जरूर दिखेगा अगर यहां से आपने इस स्थिति को अपने कंट्रोल में रखा। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी है। बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, कम से कम 1-2 रन जरूरी है यहां पे हर गेंद पे। इस बार ऑन साइड में खूबसूरती के साथ पीछे फील्डर हैं, एक सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और रन संख्या में वृद्धि होती हुई ये रन संख्या पहुंच गई है 82 पे। 2 विकेट के नुकसान पे 82। 9.3 के बाद आसिफ रसूल सामने। आसिफ रसूल बड़े स्ट्रोक की तलाश में, कुछ बड़े प्रहार करने की तलाश में, जानते हैं कि यहाँ थोड़ा स्कोर बोर्ड को गतिशीलता देना जरूरी। ऑन साइड में हालांकि तो क्रीज छोड़कर बाहर निकले जरूर थे। 1 रन जरूर चहलकदमी करते हुए। 1 रन और खाते में। 83 पे 2। 10वां ओवर, 2 के दुकाना बाकी। 9.4 के बाद
अजीम काजी सामने एक पे, आसिफ रसूल 39, उनका व्यक्तिगत योग 26 गेंदों से। अंकित नरवाल और उनके साथ आसिफ रमजान, ये दो खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब के। कुछ बातचीत विकेट कीपर के साथ। युवा गेंदबाज तौफीक आज़ाद की, अच्छा ओवर अभी तक उन्होंने डाला है, 4 गेंदों में मात्र 3 रन खर्चे हैं। ये दृश्य है, ये डग आउट दृश्य सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब के। अभी भी परवेज रसूल का आना बाकी, वो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। आज अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, पर बल्लेबाजी में कमाल दिखाना होगा अगर उन्हें अवसर मिलता है। अजीम काजी सामने 83 पे 2, 9.4 के बाद। तौफीक आज़ाद ऑप्शन से बाहर ड्राइव किया, एक सिंगल मिल जाएगा। ये चौथा सिंगल इस ओवर में, चौथा रन इस ओवर में तौफीक आज़ाद के। पर आज़ाद ने थोड़ा कंट्रोल में सिचुएशन को रखा है और अंकुश जरूर रखा है रन गति पे इस ओवर में। 9.5 के बाद 84, 2 विकेट, 8.95 रिक्वायर्ड रन रेट। आखिरी गेंद, आसिफ रसूल सामने, हवाई यात्रा पे, पीछे फील्डर और यहां कैच छोटा आसिफ रसूल का। और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी विकेट अगर कैच लपक लेते। ओवर की समाप्ति, 10 समाप्त। और यहां 85 पे 2, ये देख लीजिए, वो पिछला घुटना जमीन पे, उसके बाद ऑन साइड में, काफी देर हवा में रहने के बाद पीछे फील्डर, ओ कैच छोटा यहां पे। और ये कितना महंगा पड़ सकता है ये जीवनदान आने वाले समय में अथवास इंडिया 11 को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 10 ओवर समाप्त और 10 ओवर में बने 82, 2 विकेट के नुकसान पर। और समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, एंड दिस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट इज ब्रॉट टू यू बाय जस्ट बुखारा। Halfway mark, 2 wickets down. Sopore Stallions putting an 85 on the board. Now required at the rate of 9 and over. 9 runs per over. And Ali Malik is all set to begin the fresh over. First ball of fresh over. Oh, Asif Rasool somehow gets away with that one in the end. 2 men converging. One gets to the ball and picks it up, but look at that one. How he worked it onto the onside. Dikshant Kundal. Hand is on his head for a while. Wow. How that save with the batter. Azim.
rock back and pulls it away. But only a single accrued on that occasion. They are 87 for 2. They require 88 more runs from 58 balls. That's the equation for you. Ali Malik in his third over, 1 for 13. Aleem has been pick up the bowlers. He has picked up one. That too, the invaluable wicket of Asif Ramzan, who miscalculated and misread that delivery completely. Now he decided to go downtown. That's a hit hard straight down the ground. And that's gone into the fence for 4. Step out. Look at their dugout. That pleased all of them there. Watch that again. Oh, he gets to the pitch of the ball. Through the line. Good connection. And gets it through in the right direction. Aleem looks to punch it and lost control over the ball, unable to put that one away. He was shaping for that half cut, half punch. Doesn't middle, doesn't time it. They require an 84. This one gone flat, and that's gone for 4 again. Rocks back again. He's using that depth of the crease, gone deep in crease again, and this is their dugout again. But look at that shot. He's playing close to the stumps. And earlier on, that boundary where he kept the ball away, Dikshant was surprised. Look at that control. He transferred weight onto the back foot. Then goes with that shot. Look. He's telling his partner Azim Qazi, I can punch it away through covers too. I have another option that is called the plan B. When required, I can opt for that. I can go with that one again. It's 80 for the law. It's 80 needed from 55, then 95 for 2. This over we have seen 10 coming. 2 singles. And after that we saw 2 boundaries. In between a dot delivery. Ali continues to operate, and there is going to be call for the second. Will he make it? Won't get the second one. Good field in the end. Denied that second run. And that marks the completion of over number 11. They're 96. And Asif brings up his 50 of just 32 balls. Another milestone. In today's match, we saw a couple of 50s coming. This is the second one. One we saw of the bat of Dikshant Kundal, who scored 87 unbeaten. That was a brilliant innings. Look at Asif Rasool this innings. 32 balls, 50 runs, 7 fours, 1 6. Strike rate of 156. That is the important thing. Rotation of strike. Rotating. And he's so nice there. He's one of the best in that area. 156 is the strike rate. So he's trying to keep that measure of strike. 9 overs, 79 behind. It's below 9 again. It touched 9 at the halfway mark. It's below 9 again. 9 ओवर का खेल शेष 79 रनों की आवश्यकता 54 गेंदों से 96 पे 2-11 के बाद आसिफ रसूल 50-32 गेंदों से एक बेहतरीन अर्धशतक ये पारी ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी और अजीम काजी 3 पे 5 गेंदों से मुदस्सिर अब्दुल्ला 1 ओवर 13 रन दूसरे स्पेल में उनका प्रयोग इसी छोर से उन्होंने गेंदबाजी की थी पहली गेंद खूबसूरती के साथ हवा में और एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका आसिफ रसूल के बल्ले से निकलता हुआ और उनकी व्यक्तिगत रन संख्या पहुंच गई है 54 पे लगातार प्रहार सेट बैठ रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये देख लीजिए खूबसूरत अंदाज इस बल्लेबाज का शानदार बल्लेबाजी आक्रमण और विकेट के चारों ओर दर्शनीय स्ट्रोक खेले आज आसिफ रसूल ने एक बेहतरीन पारी आज पारी का प्रारंभ करने आए थे अंकित नरवाल के साथ नरवाल जल्दी चले गए उसके बाद दूसरे विकेट के रूप में आसिफ रमजान भी अगली गेंद लेकर के और एक बार फिर इस बार ऑन साइड में खूबसूरती के साथ ये स्टैंड्स में छक्का मिलता हुआ आसिफ रसूल को
60 पर पहुंच गया, 2 गेंदों से 10 मुदस्सिर अब्दुल्ला के विरुद्ध। और पिछले ओवर में 13, इस ओवर की 2 गेंदों से 10, 1.2 ओवर में 23 रन खर्चे हैं इस गेंदबाज ने कड़े प्रहारों। और ये देख लीजिए पूरी तरह से शफल करके लेग साइड में चले गए थे और फिर वहां से गेंद को निकालने में सफल। मानसिकता इस बल्लेबाज की, महानता इस बल्लेबाज की, इरादे उनके अलग प्रकार के, और उसको स्पष्ट करते हुए 106 पे 2, 69 चाहिए मात्र 52 गेंदों से। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पे छक्का, 7.96 रिक्वायर्ड रन रेट, 60 पे आसिफ रसूल। मुदस्सिर अगली गेंद लेकर के ऑफ साइड में पर सीधे फील्डर के पास। स्ट्रोक अच्छा था पर फील्डर को भेद नहीं पाए। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 106 अभी भी स्कोर टिका हुआ। 12वें ओवर की गेंदबाजी, 69 की आवश्यकता, 51 गेंदों का आना बाकी। ये दूसरा ओवर मुदस्सिर अब्दुल्ला का, 23 खर्चे हैं पर कोई खास प्रभाव नहीं अभी तक छोड़ पाए हैं। एक सटीक स्तर लाइन पे गेंदबाजी करने की, सही दिशा और लंबाई पे गेंदबाजी करनी जरूरी है इस गेंदबाज को। दबाव है क्योंकि 2 बड़े स्ट्रोक उनके विरुद्ध लगाए हैं आसिफ रसूल ने इस ओवर में। इस बार बल्लेबाज को फॉलो किया, चतुराई के साथ फेंकी हुई ये गेंद। जानते थे कि एक बार फिर वो जगह बना करके थोड़ा शफल करने लेग साइड की ओर, यहां तो चकमा दिया आसिफ रसूल को। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 60, 36 गेंदों से आसिफ रसूल। अजीम काजी ने 3 बनाए हैं, 106 पे 2, 11.4 ओवर की गेंदबाजी। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग का ये 18वां मुकाबला, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। अथवास इंडिया 11 की टीम गेंदबाजी कर रही है, 174 उन्होंने बनाए थे। एक बार फिर ऑन साइड में पीछे फील्डर तैनात जरूर है और पलटकर तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज 2 रन और खाते में जोड़ लिए। रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल का बेहतरीन परिचय। 1 को 2 में कन्वर्ट किया, 2 और खाते में, 108 पे 2। अंतिम गेंद का आना बाकी। अभी भी 67 रनों की आवश्यकता, 49 गेंदों का आना बाकी। फिर ये पारी काफी महत्वपूर्ण आसिफ रमजान की इससे पूर्व, और आसिफ रसूल की ये बेहतरीन 62 रनों की अभी भी अभिजीत पारी। क्या लाजवाब पारी खेली है इस गेंदबाज, ओवरऑल बल्लेबाज ने, क्योंकि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है गेंदबाज की हैसियत से। वो गेंदबाजी जब करते हैं तो उनका कमाल का प्रदर्शन रहता है, लेकिन जब बल्लेबाजी में अवसर मिलता है तो वहां पर भी ये शानदार प्रदर्शन आपके स्क्रीन के सामने। उनकी पारी 62 पे नाबाद है 38 गेंदों से, 12 समाप्त, 108 पे 2, 48 गेंदों से 67 रन चाहिए। सोपोर स्टैलियंस को 8 विकेट सुरक्षित। Asif Rasool showing that calmness with the bat. His batted for 62 of 38 balls, and Azim Kazi, who walked in play, who replaced, I can say, Asif Ramzan, and is batting on 3 of 5 balls. Came at number 4. Now he's batting around Asif Rasool, who scored a plenty. Now on to 62. They're 67 runs behind. Tawfiq Azad all assemble it. Dikshant having a word telling him, you have to bowl like this, keep it away from the 2 batters, and Azim is going to be on strike. Azim Kazi, what a name he has got. In today's game we got 2 cricketers. When it comes to their names, one is Kazi Junaid, and this is Alim Kazi. We can say namesake when it comes to that Kazi. Driven straight, chase for the man. Are they going to look for second here? There is a fumble again. This is good running. Mature cricket from Azim and Asif there, putting amount of pressure. Exerted that pressure, looking for the second, getting that in the end. They are 65 behind from 47. That's aerial, that's Apish. But it's gonna drop short of field there. One more run for Azim. Azim knows that it's better to hand over strike to the crisis man Asif Rasool. Man of big stages. He knows how to perform on a podium like this, on a platform where you got plenty of websites, portals to expose your talent.
And to tell the world, this lad is Asif Rasool, and that one, it's aerial, it's upish. Fielder was interested for a while, shown some interest, but that's gone beyond his reach. And into the side screen for 6. From Nelson to 117. That's Asif Rasool for you. Step out through the line. Watch that again. And it's a 6 coming. Now look at that one. Full toss. Connected and takes it on the full. Goes with that switch hit, but find his fielder in place. Telling Dikshant, look how quick he was there, how agile he is. I was counting a boundary, and he denied that. Now makes room again. This time there is a man, should be taken. He is taken this time. And Tawfiq Azad gets his man. It would have been earlier on, but that catch gone down. Now he's taken. It's Nasir Lone there who took that. A catch with ease. It's Asif Rasool is gone. And that wicket falling into the kitty of Tawfiq Azad. The young spinner gets his man. He gets the big one. The big fish caught in the net. Cool, composed, good catch in the end. And with that, one goes back, other one walks in. It's Asif Rasool out and Parvez Rasool comes in at number 5. And look at this lad. He was eyeing that wide of extra cover, but finds that mid-off in the end. Who came charging in. Oh, John Saab is there, the natural entertainer. He hugs Asif Rasool. 58 away from 43 balls. 68, 8 fours and 3 sixes. To his credit and to his name. And there it comes, the turn of Parvez Rasool. 58 away, 43. I think stage is set. He just need to finish it now. What will he do with the bat? As he's marking the fresh guard. Yesterday, he's shown that urgency going for the sweep shot. That didn't pay it off in the end. Ali Malik meets in there. Goodwill gesture. 58 away from 43 balls. This is match number 18. The second one this evening coming up, that's going to be virtual quarter-final. And the winner of that game will progress. Will move to the next round. It's 117 for 3. 13 done. Successful over from Tawfiq Azad. First over yielded 5, second gone for I think 9 of this. And overall makes it 14 of 2. 58 behind from 42 balls. Parvez Rasool yet to open his account. And he's got Azim Qazi, who's got his eyes in. He has been there for a while. He has been there hanging around for quite some time. He walked in when Asif Rasool was there. Now his brother joins him in the middle. The required rate is 8.29 an over. Current rate is 9 an over. They improved it. Now the current rate is higher. The required rate is below that. It's lower at the moment. 7 overs with 7 wickets in hand. Last 5 overs yielded 62. If we talk of when it comes to the Sopore Stallions, they conceded plenty at the fag end. Now they require 58 from 7 overs. Mudassir Abdullah to continue. One man here at mid-off area. One around that scale leg boundary. One is going to be an extra cover area. Fresh over first ball. Azim works it away nicely with the soft hands. Qazi Junaid. The man there. One more run taken. 57 away from 41 balls. And Parvez is marking his fresh guard again. Balwinder Kumar says, cover in. He's going to get ready. He's lock of that. 118 for 3. The required rate comes little down there. .57 from 41 balls. It's 26 up 2.1. As we watch Mudassir again, he's getting ready to operate.
from southern pavilion end. We have two ends here. That one right behind, trying to pull it, trying to work it properly. And that one hits it into the turf in the end. One more run. 119. Where's the southern pavilion end? Where the northern pavilion end? Straight. If we talk of the straight boundary, it's a bigger boundary. The long stub boundary, it's a bigger boundary. Sideways, little shorter. Azim played that cameo other day. He has to come up with another one here. A cameo of 20-30 will flatten the chase. That's going to make the light work of the chase. 56 away. But that's it. He's bowling really well at the moment. Singles won't hurt. They're happy to concede, because asking rate is going to go up. Singles are not going to be enough for Sopore Stallions. They need to find a boundary each and every over to counter the chase. 120 on the board. Parvez, he has to adjust. He has to adapt here. What will he do against the likes of Mudassir? Now he decided to come forward. Comes on to the front foot. Underarm pull, that's all he's going to do there. And with that single, it's 121 for 3. Bigger shades visible to the naked eye. Sun is on its way. But the gentle breeze continues. That is going to be a kind of tonic for players in the middle. Inside the line again, soft hand, gently done. Good cricket, smart cricket from Azim. He's pretty watchful at the moment. He's watching the ball. He's trying to understand what the bowler is doing. And he's there equally to the task again and again. He's trying to stay cautious, vigilant, and watchful. 1-2-2 for 3. Mudassir Abdullah with the last ball of his third over. Flicked away nicely. Scare on the on. There is a protection. There is a fielder. Will just be one. Unable to get that one either side. But he's going to get one. He will keep the strike. 6 overs to come 52 away. Sopore Stallions in today's game. And they played 2 games prior to this one. They got 2 points and they lost to the Royals. And Royals, the only team who won all their 4 league games. The only team in the tournament. And are they going to check? It's a no ball. He overstepped it. And the strike umpire, Balwinder Kumar, asked the TV umpire to assist and help. Let me know, is it a no ball or a fair ball? It's a no ball. Now he has to reload and re-bowl that one. Now there is going to be little change in that scorecard, as the no ball will mean 1 more run will be added. An extra ball is coming up. He has to bowl it again. Mudassir will be under pump. And those who are part of live broadcast, you know that the world is evolving. So is Alhamdulillah JK Sports Time. We are also available in Play Store nowadays. You can download and install the app and avail the benefit. And you can enjoy different columns are there. Essays are there. That one, it's a frayed ball. It flies and it goes the distance. And that's what he desired. That's what he wanted. He gets the desired result in the end. And there is a delight in their dugout. There is a smile back again. And with that 6, the chase is going to be below 50 now. They require now below 50. And it's coming down 50s now. It's around 40s now. They're into the 40s. And take a look again. He gone aerial. Makes good use of that. It was a slow one, but nice pickup from Azim Qazi. He read that completely. Awareness
and that vigil that needed, and it was spot on. The timing and the footwork, the placement that is also there. Tawfiq Azad is given the ball again. 45 behind from 36 balls. Their last ball changed the complexion of the game now. Parvez Rasool has decided to take him on. There was a genuine nick and edge, but he dropped short of fielder there. So no problem at all. It's 131 for 3. 44 needed to grab those invaluable 2 points. The two teams in the middle, they had their moments in the game, and it was an opportunity for Athwas India 11 to find their best possible 11, a combination and a compact unit for the next game. That's going to be the knockout game. Just one game. If you win, you are ahead. If you lose, you have to pack your bags and you have to wait for the second season to be here at Bakshi Stadium for that Red Premier League Edition 3. In the meantime, that's a good shot. Handsome looking shot in the gap. He's getting 4 more runs there. Gets a boundary. He got a boundary on that occasion. It's 135. The timing is there, and the class of Azim Qazi. Look, the replays will tell us the story. Look, it depicts the class of batter, the timing, the pure class of Azim Qazi. And now they require 40 from 33 balls. This time goes flat. That one, but Nasir does well. Nasir cuts it off and keeps it down to just a single. It was hit hard this time. Azim, he was eyeing a boundary, and he targeted that area. Thought that long on won't be able to cut it off, but he gets well timed to adjust there, to be in place to stop the ball. They are 39 behind from 32. Parvez batting on 4 of 5 balls. Stallions marching all along. It's a good looking shot. Call is for 2 again. Will he get more than 1? It's a boundary. Punchy shot up the bat of Parvez Rasool. And that boundary is being praised. There is a round of applause in the dugout. The icon with that iconic control on that occasion. Look, this one is travelling. It's going on its way. Irfan unable to cut it off. This one again goes deep in crease. I have seen him batting like this. I still remember that. He knows how to transfer weight from front foot to the back foot. And if you remember that innings in South Kashmir, somewhere in South Kashmir, 2 years back or 2 years ago, it's 141 for 3. He will keep the strike. They require 34 more runs from 30 balls. 5 overs are going to come. I still remember that. The adjustment, that solid technique. And it's important to transfer weight from front foot to the back foot, from back foot to the front foot. You have to lean into the shot. Once you leant onto the ball, you need that body weight. It has to be transferred likewise, and you have to keep eyes on the ball. And he knows that. The flexibility he has got. He knows how to go onto the front foot, and then how to use the depth of the crease. He's master there. He has that ability. That class is pristine. He's got that pristine class and beauty. It's just like that poetry in motion, and at times we call those skills and the nerves of steel. He's very skillful. 34 needed from 30 balls. See, bowling side need miracle. They need wickets. They need cluster of wickets here to prevail. Sopore are just 34 away. देखिए मात्र विकेट ही आपके पास हो पाए हैं और फिर वहां से आप जीत कर सकते हैं। गैप में गई है गेंद, खूबसूरती के साथ चौका मिल जाएगा यहाँ पर। 4 और खाते में परवेज रसूल के और दोहरे अंकों में उनकी व्यक्तिगत रन संख्या वो 13 पर पहुंच चुके हैं। अली मलिक का इस्तेमाल किया गया, खूबसूरत बेहतरीन गैप में, बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट।
चौका बटोर लिया अपने लिए और अपनी टीम सोपोर स्टैलियंस के लिए 4 और खाते में। और 4 रनों के साथ सोपोर अब धीरे धीरे से उस जीत की ओर अग्रसर। 145 पे 3, 30 चाहिए 29 गेंदों से। यहाँ एक सिंगल मिल जाएगा, एक और अब 29 की आवश्यकता 28 गेंदों से। 140 पे 3 और 7 विकेट। अब बात हो रही थी कि अथवास इंडिया 11 को जीत अर्जित करनी है तो फिर विकेट प्राप्त करने होंगे, क्योंकि विकेट की आवश्यकता है। यहाँ रन बॉल आप आसानी के साथ इस मुकाबले को समाप्त कर सकते हैं। और जानते हैं परवेज रसूल के पास इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव है, अजीम काजी उनके साथ दूसरे छोड़ पे हैं, तो जानते हैं सिंगल डबल से भी आप स्ट्राइक को रोटेट करते इस मुकाबले के अंत तक पहुंच सकते हैं। पर अथवास को चाहिए विकेट, और विकेट लगातार अंतराल में, वो एक झुंड की सूरत में विकेट चाहिए, फिर जाकर के अतिरिक्त दबाव आ सकता है। इरफान उल हक ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर कुंडल के पास, हालांकि उनसे भी गेंद छिटकी हुई, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, पर सिंगल जरूर मिला था इससे पूर्व। 1 रन। 147 पे 3, 15.3 ओवर की गेंदबाजी। 28 चाहिए 27 गेंदों से। अली मलिक 3.3 ओवर 28 रन 1 विकेट गेंदबाजी विश्लेषण। अथवास इंडिया 11 वर्सेस सोपोर स्टैलियंस के बीच 18वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025। अथवास रिटेल प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल एंड अथवास विद कॉन्फिडेंस। और यहाँ आत्मविश्वास दिखाया आज सोपोर स्टैलियंस में। वो पिछला मुकाबला बुरी तरह से हारे थे, इस मुकाबले में वापसी बहुत बढ़िया। फयाज सरवर आज टीम का हिस्सा नहीं है, और अथवास जो है उन्हें वो आत्मविश्वास नहीं दिखा। सही है, हालांकि बल्लेबाजी बहुत बेहतर की, पर विकेट उनको नहीं मिले, क्योंकि लक्ष्य स्कोरबोर्ड पे 174 जब दूसरी पारी प्रारंभ हुई तो हमने जिक्र किया था इनिंग ब्रेक्स के दौरान, आसान नहीं रहने वाला, एक चुनौती रहने वाली है। पर पारी आसिफ रसूल ने कमाल की खेली, अंकित नरवाल और तीसरी बार फेल हुए आज मुकाबले में, पर आसिफ रसूल ने शानदार पारी, उनके साथ आसिफ रमजान ने भी एक बेहतरीन पारी खेली, और अब परवेज रसूल और अजीम काजी एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। 149 पे 3, 15.26 चाहिए 25 गेंदों से। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ पुल किया, पीछे फील्डर हैं, पर सिंगल मिल जाएगा। अंतिम गेंद पर रन आया, स्ट्राइक रहेगी परवेज रसूल के पास। 150 पूरे 16 ओवर में 150, 25 चाहिए 24 गेंदों से। यह है इक्वेशन, यह है आंकड़ा, और 4 ओवर में 31 रन 1 विकेट गेंदबाजी विश्लेषण अली मलिक का। इसके बाद एक और मुकाबला 6:30 बजे लाइव प्रसारण में आपके साथ जुड़ेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल में, साथ में रेड एफएम जेके यूट्यूब। मुकाबला संघर्षपूर्ण, कांटे की टक्कर का मुकाबला, क्योंकि एक तरफ द रियल सुल्तान समरबुक और दूसरी तरफ ग्लोबल लड्डू टाइटंस। जिस टीम के पाले में जीत आएगी वो टीम बनी रहेगी अगले सत्र के लिए, क्वार्टर्स के लिए, और हार तो आप फिर प्रतियोगिता से बाहर, वो सफर वहां पे समाप्त हो जाएगा। पर किस टीम का सफर आज रात्रि समाप्त होगा ये देखने वाली बात हो गई। पर एक संघर्ष जरूर देखने मिलेगा, जहां एक तरफ इम्तियाज लेफ्टी और उनकी पूरी सेना, इरफान मीर दिखेंगे, और उसके अलावा सलीम मीर दिखेंगे, और अन्य दीगर खिलाड़ी समीर बैल दिखेंगे। एक बहुत ही बेहतर वो तिगड़ी दिखेगी, वहीं पे द रियल सुल्तान समरबुक एक नए रंग में, एक अच्छा मुकाबला होगा। फिलहाल 16 समाप्त 150 पे 3, 2 ओवर 5 रन 1 विकेट। लोन नासिर वापसी कर रहे हैं गेंदबाजी में, ये क्रूशियल समय है। लोन नासिर सामने परवेज रसूल, एक संघर्ष होगा, ये देखने लायक होगा। पहली गेंद खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, पीछे फील्डर, पर वहां पर रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। पलटकर दूसरे रन के लिए काफी आगे निकले हैं, पर वापस लौटना पड़ेगा। इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना जरूरी है। 1 रन और खाते में 16.1 के बाद 151 पे 3, 23 गेंदें 24 रनों की आवश्यकता। ओवैस बाबा भी आने वाले बल्लेबाजों में, पर लोन नासिर और उनके साथ इरफान उल हक, हालांकि इरफान उल हक थोड़े खर्चीले साबित हुए अंतिम ओवर्स में। ये 2 ओवर काफी महत्वपूर्ण लोन नासिर के, क्योंकि न सिर्फ उनकी टीम के लिए बल्कि सोपोर स्टैलियंस के लिए, और कैसे यहाँ बल्लेबाजी करी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। 24 चाहिए 23 गेंदों से। 151 पे 3, 16.1 के बाद अजीम काजी 22 पे सम। लोन नासिर पहले उन्होंने नॉर्दर्न पवेलियन से गेंदबाजी की, फिर 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगला स्पेल अब उनका प्रारंभ होता हुआ साउदर्न पवेलियन से। पर कमाल के आंकड़े, मात्र 6 रन अभी तक उन्होंने खर्चे हैं। नासिर इस ओवर में अगली बार ऑन साइड में खूबसूरती के साथ काजी ने खेला, 1 रन और अच्छी रणनीति, अब सिंगल डबल से भी इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहाँ 22 गेंदों से अब 23 रनों की आवश्यकता। 152 पे 3, 16.2 ओवर की गेंदबाजी, और धीरे धीरे से सोपोर स्टैलियंस की टीम अब उस लक्ष्य की ओर, जो 175 का लक्ष्य मिला है, ये दूसरी जीत होगी तीसरे मुकाबले में।
JK सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और सोपोर की टीम निश्चित तौर पे जीत के साथ एक आत्मविश्वास लेकर के अगले मुकाबले में कल शाम को सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला के साथ भिड़ंत करें। वो आखिरी लीग मुकाबला होगा। इस बार ऑन साइड में खूबसूरती के साथ एक और सिंगल। बहुत ही बेहतरीन सेंसिबल क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट परवेज रसूल और अजीम काजी द्वारा 153 पे 3, 16.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी। 21 गेंदें 22 रनों की आवश्यकता, 3 गेंदों से 3 सिंगल। बेहतर, अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ इस समय बल्लेबाजी। एक तरफ काजी, दूसरी तरफ परवेज रसूल। और इस मुकाबले को आप बेहतर तरीके से फिनिश करना। और आपने जब आसिफ रसूल का विकेट गिरा था तब आपने ये जिक्र किया था कि अब आपके सामने एक मजबूत आधारशिला प्रदान कर दिया बल्लेबाजों ने, तो फिनिश करना बेहतर तरीके से इन बल्लेबाजों को। और वही कार्य इस समय कर रहे हैं। 153 पे 3, 16.3 के बाद विकेट चाहिए अथवास इंडिया 11 के गेंदबाजों को। लोन नासिर इस बार फिर गैप में गई है गेंद, पीछे फील्डर हैं तैनात, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और 4 गेंदों से 4 सिंगल। अच्छी रणनीति। 154 पे 3, 16.4, 20 गेंदों से 21। लोन नासिर ने 4 गेंदों से 4 रन खर्चे। 2.4 ओवर में 9 रन उन्होंने खर्चे हैं। एक विकेट जरूर मिला है। ये उनका दूसरा स्पेल। परवेज रसूल 18, पिछले मुकाबले खास योगदान नहीं दे पाए थे, पर इस मुकाबले में 18। हालांकि पहला मुकाबला वहां उन्हें बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिला, दूसरे मुकाबले में ज़्यादा योगदान दे नहीं पाए, तीसरे मुकाबले में अच्छी पारी जहां टीम को आवश्यकता है 18 पे 13 गेंदों से। और काजी ने 24 की 18 गेंदों से बेहतरीन पारी खेली है। सोपोर स्टैलियंस 154 पे 3, 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में। 21 चाहिए 20 गेंदों से। ऑन साइड में ड्राइव खूबसूरती के साथ कलाइयों के दम पे सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में। 5 गेंदों से 5 सिंगल। क्या मानसिकता है बल्लेबाज परवेज रसूल और आजिम काजी की। 155 पे 3, 16.5, 19 गेंदें 20 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट 6.32 रन ए बॉल। यहाँ से सोपोर स्टैलियंस की ये दूसरी जीत। 18वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का। और 19वें मुकाबले में एक बार फिर आज शाम 6 बजे आप लाइव एक्शन में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 19 से 20 ये ज़रूरी है, 19 से 20 रन बनाने। और अजीम काजी और परवेज रसूल का बीच मैदान में बने रहना। ऐसे तैसे करके दौड़ पड़े सिंगल के, ये रन मिल जाएगा। 1 रन और खाते में। ओवर की हो गई समाप्ति। 17 समाप्त। 156 पे 3, 18 गेंदों से 19 रनों की आवश्यकता। 6 singles in an over. 3 overs, 1 for 11. Another tight over. And just 6 of it. Nasir Lon. Coming from that place of Bandipura. He has a spark. And what I found today, some of the glimpses that telling all of us he's a force to reckon, Nasir Lon. That's why he was the part of that all-rounder camp under the leadership, under the supervision of VVS Lakshman. And Lakshman, you know that he has a big name in Indian cricket, and he was part of that camp. He was among the all-rounders of the country. Bowled that terrific over. Just 6 from that over. 3 was 1 for 11. 19 needed from 18. Irfan has got the ball. He's coming from that beautiful place of Lolab. The boy from Woods to this beautiful stadium, and he has been to state level. In the meantime, here is Irfan. The swell digs it out. Nearly yokes him on that occasion, but Azim gets pat on it. Look, that small boy is on the field. This good move from Athwas India 11. Let them excel coming at the stadium. Coming into the stadium, and right now he's out on the field. It's a good thing. This will help him. And he will get a kind of exposure. That phobia will be gone absolutely one day, and he will be a man one day, and he is going to be a force that people will definitely praise and reckon him, and that recognition will only come into play. He can only earn that
when he gets that exposure. This is the high podium at platform. I think a good move from Athwas India 11. Engaging this young generation and getting some time with some of the players who played basic level cricket. Oh, that is a beauty. And he gets his man. That one didn't rise and the middle pole is uprooted. The talented boy from Lolab gets the iconic cricketer of the valley on that delivery. It's important wicket. One golden strike that didn't rise. He tried his level best to keep that one away, but Irfan has his man. A wicket to celebrate for days and weeks to come. What a strike. 19 of 15 balls. Strike rate of 126. Two healthy boundaries. Bowled by Irfan ul Haq from Lolab. 18 away from 16 balls. Can Irfan turn the tide? Will he make it tricky chase after getting rid of the brilliant cricketer of Jammu and Kashmir? He's on his way back to pavilion and 18 needed from 16 balls now. This is JK Super Cement presents Red Premier League Season 2, and we got Athwas, a retail Athwas with confidence. It's co-powered by Athwas. And look at Sumit Kumar. He walks in yesterday. He was undone by Yash Garg. And today it's a different day. Just 18 needed. Asif Ramzan and Asif Rasool, along with Azim Qazi. And we can also include Parvez Rasool making flat work of the chase, but the job isn't cut out. They're still 18 behind. Athwas has got a good combination. Brought in 4 new guys. It won't be easy to fit in, but they're just trying to bring in some other guys as a replacement, because all the time you won't have all the prime 11 available. So you have to find some other options to fit in their boots for that next important encounter. That's going to the quarter-final. One final punch there and you're into the semis. 18 away from 16. Sumit Kumar gets another Yorker from Irfan. Now Irfan is posing a threat. He's looked threatening with the ball. That too at the fag end. And when required the most. He's coming up with Yorker after Yorker. And what Sumit Kumar do? First one, dig out nicely. Kept it away. Keeps Irfan on the bay. 18 needed from 15 balls now. The number of balls, less. The number of runs, it's more. Oh, there is a chance. Mudassir Abdullah would have been wicket number 5 down. What you have done, Mudassir Abdullah is kicking himself. You can see that. You can see that desperation. You can see that reaction and response. He must be kicking. He is kicking himself. And look at Mudassir Abdullah. Nasir Lone isn't happy. Irfan not passing comments right now. He's trying to focus on the game here. No hooks, pokes only, folks. And he's eyeing one more here. Sumit Kumar is the lucky one. He gets an opportunity. Oh, that's a good shot. In control, but there is a man this time. There is Sajid, the third man. They're going to push for second. Good running between the wickets. This is smart cricket. Brilliant one from Sumit Kumar and Azim Qazi. Just 16 away. 2 caught shot of that target. And it comes down to 16 now from 13 balls. Important brace there. And it's going to be interesting. Who knows? It can be if Irfan chipped in with a dot or a wicket here. That will make it more interesting. And the spectators here, still a good size of spectators here. They will enjoy the game. They will get something to cheer at the fag end. Something that's going to keep them engaged with the game. Intact with this one here.
Once again a change in the field. Mid-off is going to be up inside. No one at long off. Is it a kind of invitation for Sumit Kumar? Will he break free? Will he go mid-off? Down the leg side. Oh, this is going to be a big mistake. But he's lucky that Dikshant Kundal took that pace of the ball. And they're going to look for double here. 3 wides. And it's going to be 13 from 13. Irfan lost control on that occasion. He was just trying to stay focused. But this time lost control over the ball. It's down to 13 from 13. 13 गेंदों से 13 संघर्ष था इस मुकाबले में, रोमांचक थी इस मुकाबले में। भले ही 6 विकेट हाथ में है, पर 13 गेंदों से 13 रन चाहिए मैच जीतने के लिए सोपोर स्टैलियंस को। सुमित कुमार सामने, इरफान उल हक के आखिरी गेंद इस बार हल्के हाथों के साथ उसको डैप किया, पीछे फील्डर, सिंगल मिल जाएगा। अब 12 गेंदों से 12, 2 ओवर में 12 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए सोपोर स्टैलियंस को। ये बेहतरीन मुकाबला, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, परिणाम कुछ भी हो पर दर्शकों को एक बेहतरीन मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। आखिरी 2 ओवर का खेल, 18 समाप्त, 163 पे 4, 12 गेंदें बची हैं, 12 गेंदों से 12 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। काजी 26, समित कुमार 3, 4 गेंदों से और 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने 9.06 करंट रन रेट। आखिरी 2 ओवर का खेल, 12 गेंदें 12 रन। 18वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 second edition presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. और एक और आत्मविश्वास भरा मुकाबला, वह आत्मविश्वास दोनों टीमों में दिखेगा आज। और कहां पे आत्मविश्वास की कमी दिखेगी, वो मुकाबला आज शाम 6:30 बजे लेकर के 19वां मुकाबला होगा। ग्लोबल डू टाइटंस वर्सेस द रियल सुल्तान समरबुक के बीच डू और डाई की सिचुएशन, संघर्षपूर्ण वो मुकाबला। जीत आप टूर्नामेंट में बने रहेंगे और हार तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं। 18 ओवर समाप्त, 163 पे 4, अजीम काजी 26 पे, सुमित कुमार 3 पे, 12 गेंदों से 12। किस गेंदबाज का चयन? नासिर लोन का 1 ओवर बचा है और उसके अलावा अन्य ओवर। क्या नासिर लोन 19वें ओवर में गेंदबाजी करेंगे या फिर अंतिम ओवर में? 19वां ओवर काफी दिलचस्प, देखने लायक। 12 गेंदों से 12 रनों की आवश्यकता, 163 पे 4। फील्डिंग सेट की जा रही है और अब जाकर के अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार नासिर लोन। 3 ओवर में 11 रन दिए हैं, 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी उन्होंने किया, अनुशासन, पैनापन, किफायतीपन, कसी हुई गेंदबाजी। और पहली गेंद खेला जरूर वापस बॉलर की दिशा में, पहली डॉट गेंद, 11 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता सोपोर स्टैलियंस को। Suspense in the middle, pressure in the middle, pressure on both ends. First ball dot, 12 needed from 11 balls. Nasir Lon has got the ball. First ball, that was a right on money there. Denied any possibility. Sumit Kumar, he made little room there, but unable to put that one away. Here comes the ball number 2. He is eyeing that scare on the on. And little adjustment again in the field. One more, drops down to the boundary line. It's going to mid-wicket around that boundary line area. So that means there is no one going to be close in around that short mid-wicket area. There is going to be a big space and Sumit is allowed to look for 1 and 2 there. Will he go big here? The second ball, full toss, and it ended up as a full one, trying to york him, and it's a full toss, low full toss, and it landed beyond the stumpers there. Another dot ball here. 12 needed from 10. 2 crucial dots from Nasir Lon here. Lon Nasir is really doing well with the ball here at the fag end. This is the 19th over. 2 balls and 2 dots. Sumit Kumar is yet to find the middle of the bat. He's yet to put bat on the ball. Yeah, he's on to 3 of 6 balls. And this over, he's struggling. And Lon Nasir is making it tough and tight in the middle. Tense a chase underway. At one stage, it looked like that it's going to be a walk in the park. But that's how cricket is changing its colours. It changes its colours again. That one trying to heave is beaten completely. 3rd dot from Nasir Lon here. It's down to 12 from 9. It's getting tough. It is getting difficult. And Nasir is really troubling Sumit Kumar. Look, Sumit is telling Azim Kazi, I'm unable to find the ball. I'm unable to middle the ball. He's feeling that certain amount of heat at the moment. 3 crucial dots. Another golden dot there. And that is bringing huge amount of pressure on Sumit Kumar. Is it going to be another nail biter here? Will it go down to the last ball?
Let's see. Or is it going to be Sumit Kumar to finish things off in this over? 9 गेंदों से 12 रनों की आवश्यकता, 163 पे 4, लगातार 3 डॉट गेंदे इस ओवर में। 9 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता, 163 पे 4। ऐसे में सामने सुमित कुमार, 7 गेंदे उन्होंने खेली है, 9 गेंदे उन्होंने खेली है संभवतः। और वो यहाँ पर कनेक्शन मिल गया, यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। 1 रन पूरा किया दौड़ करके, क्या दूसरे की मांग जी नहीं, 1 रन और 8 गेंदों से 11 रनों की आवश्यकता। चौथी गेंद पर जाकर के सिंगल मिला। 8 गेंदे 11 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 164 4 विकेट पे ये अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। खूबसूरत बेहतरीन शानदार प्रदर्शन। अजीम काजी सामने, 8 गेंदों से 4 रन बनाए समित कुमार ने। 26 पे सामने, 8 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता। लोन नासिर 3.4 ओवर 12 रन 1 विकेट। अनुशासन, किफायतीपन और कंजूसीपन, खूबसूरत और बेहतरीन स्पेल रहा है उनका गेंदबाजी का। ये कोटा रहा है, मात्र 12 रन उन्हें खर्चे 1 विकेट। और ये ओवर लाजवाब, मात्र 1 रन भी 4 गेंदों से खर्चा है। 8 गेंदों से 11 रनों की आवश्यकता। अगले गेंद लेकर के इस बार अजीम काजी सामने, काजी के लिए गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, आवश्यकता के गलियारे में फेंकने का प्रयास, सफलता मिली। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 और खाते में, 7 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब को। 9 needed now. A brace there, handy brace. Hallowful brace for the batter there. This is 19th over we are in. Azim Kazi 20 up 21. Sumit struggling in the middle again. Yesterday, without making any substantial contribution, without doing a job, and today he's found it tough to find that middle of the bat. 9 away, 7 balls. Nasir, one last time, does well again. Yorks him on that occasion. Perfect Yorker. He finishes his quota. 4 overs, 1 for 14. Economic, excellent. Wow, what a spell. He's picked up 1, but he dried up boundaries and singles. And from Lone Nasir side, it was bloom and blossom. And for batting side, it was high and dry. इसमें कोई दो राय नहीं, खूबसूरत बेहतरीन स्पेल रहा। 4 ओवर 14 रन 1 विकेट लोन नासिर का। बहुत ही बेहतरीन शानदार और आकर्षक गेंदबाजी का प्रदर्शन है जिन्होंने यहाँ इस मुकाबले में। 6 गेंदों से 9 रनों की आवश्यकता सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब को। 175 चाहिए जीत के लिए, 166 रन बन चुका है। 4 विकेट 19 ओवर में। थोड़ा सा यहाँ सोच विचार, बातचीत, वंदना, टिप्पणी एक दूसरे के साथ। क्या अजीम काजी और सुमित कुमार यहाँ से जीत अर्जित कर पाएंगे? क्या यहाँ से सोपोर स्टैलियंस को जीत दिलवा पाएंगे? ये देखना होगा। आखिरी ओवर में 9 रन। और एक और प्रश्न कि आखिरी ओवर, हालांकि इरफानुल हक 4 ओवर पूरे कर चुके हैं, लोन नासिर ने 4 ओवर की गेंदबाजी समाप्त की है। क्या मुदस्सिर अब्दुल्ला से गेंदबाजी करवाई जाएगी? काफ़ी खर्चीले साबित हुए, वो ऑप्शन है आपके पास। देखना होगा किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा। हालांकि अनुभवी लोन नासिर ने वहाँ मनोबल बढ़ाया ज़रूर अपने गेंदबाज का, और वे करेंगे अब गेंदबाजी। आखिरी ओवर 175 के जवाब में 166 पे 4 सोपोर स्टैलियन। समित कुमार 4 पे 28 अजीम काजी ने। आखिरी ओवर में ये क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कल्पना करना मुश्किल, यहाँ सभी प्रेडिक्शन फेल है। ये क्रिकेट की तरह रंग बदलता था कि एक तरफा जीत अर्जित होगी। आखिरी ओवर में जा पहुंचे और अभी भी कल्पना नहीं कर सकते। 9 रन चाहिए 6 गेंदों से अथवास इंडिया 11 के विरुद्ध सोपोर स्टैलियंस को। यह 18वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का। इसके बाद एक और मुकाबला ग्लोबल रेडो टाइटंस वर्सेस द रियल सुल्तान समरबुक के बीच। डू और डाई की सिचुएशन होगी इस मुकाबले में। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी गंभीर परिस्थिति दोनों टीमों के लिए। किसके पक्ष में यह मुकाबला जाएगा? कौन सी टीम यहाँ अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पाएगी तो जीत उसके पक्ष में जाएगी। मुदस्सिर अब्दुल्ला का इस्तेमाल, 3 ओवर 38 रन, और उनका इस्तेमाल आखिरी ओवर में। यहाँ हीरो बनना है तो फिर यहाँ बेहतर गेंदबाजी करनी होगी। 6 गेंदों से 9 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदें बची हैं और 9 रन चाहिए जीत के लिए। पहली गेंद लेकर के मुदस्सिर अब्दुल्ला, सुमित कुमार सामने बाएं हाथ के। पहली गेंद लेकर के तैयार सामना करने के लिए बाएं हाथ के सुमित कुमार। 9 चाहिए 6 गेंदों से। पहली गेंद तैयार मुदस्सिर अब्दुल्ला, सुमित कुमार के लिए उनकी ये गेंद। और इस बार
डॉट गेंद से संतुष्ट वहां पर, हालांकि एक समय पे लगा शायद लेग स्टंप को छोड़ करके जा रही है, फिर ऐसा हुआ नहीं, डॉट के साथ यहां पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 5 गेंदों से 9 रनों की आवश्यकता। It's a dot delivery, precious dot to start with, pristine dot, important dot from Mudassir Abdullah, who's gone for 38 of his 3 overs. The first ball of the pressure, it's a dot. Pressure is on Sumit Kumar, you can see that. It's on his face, you can see that he's feeling that amount of pressure. And Mudassir Abdullah is going to apply that. But thanks to the Nasir Loan, they should be thanking. They must thank Nasir Loan, who makes it to the 20th over. The next one, this time he was trying to slog it away. Will find just a single. And with that, they're 8 away from 4 balls. But look at that brilliant over, that 19th over from Lone Nasir. And it's where he kept things tight. He dried up runs. And finally taking it to the 20th over. 4 balls, 8 needed by Sopore to prevail. Who will win? Who will walk away with 2 invaluable points? Athwas, India 11. Or Sopore, Stallions. 167 for 4. This is 20th over. We are in as we watch Mudassir Abdullah again. 2 balls, 1 dot, 1 single coming. 4 balls, 8 to defend. What will he do? On strike is Azim Qazi this time round. Mudassir and Azim cuts that one and cuts well. It's going to run down to the third man for 4. It's come off the bat. He shapes for the cut shot. And ball goes past to the blade quickly. Take a look again. What happened on that occasion? Shaping for the cut shot, and it's a big edge. It's a thick edge. It runs down to the third man. Dikshant can't prevent that one. So they need 4 from 3 balls now. 3 balls, 4 needed. Mudassir Abdullah. When he started an over, he needed 9 to defend. Now just 4 left to defend from 3 balls. Azim Qazi will remain on strike. What will Qazi do? Is it the last ball? Are we going to in for other 3 balls? Are we still in this game? Are we going to see that final ball of over number 20? This is the 4th ball. 4 needed by Sopore Stallions. This time shuffle across. Aerial he goes and he's taken. Can you believe what's going on? Ali Malik takes that one. And Azim Qazi is taken. विकेट मिलता हुआ और निश्चित तौर पे ये रोमांचक स्थिति अभी भी इस मैच में बनी हुई, क्योंकि अब 2 गेंदों से 4 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। विकेट मिलता हुआ अजीम काजी को वापस लौटना पड़ेगा। हालांकि हर संभव उन्होंने प्रयास किया था, हर एक प्रयास उनका सफल हो रहा था, पर यहाँ पर सफल नहीं हुआ और सीधे कैच थमा बैठे यहाँ पर। खूबसूरत कैच, शानदार कैच यहाँ पर अली मलिक ने लपका और एक और पारी का समापन होता हुआ ये एक और विकेट गंवाया है सोपोर स्टालियन ने। और इस कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है, इस कहानी का परिणाम अभी लिखा नहीं गया है, अंत अभी बाकी है। 32 बनाई 24 गेंदों से आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 2 चौके 1 छक्का उनकी पारी में 171 पे 5। गुलजार गुली नए बल्लेबाज 19.4, 2 गेंदें 4 की आवश्यकता। क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले में? Twist, Tibble in the game. This isn't over yet, so don't go anywhere. Don't go anywhere. Why you walk away? It's game on, it chase on. 2 balls, 4 needed. 171 for 5. What a go ball. Under pressure, ball that delivery. Mudassir Abdullah showing that composure with that delivery. Kept it simple around that off and middle. And Azim Qazi flicks that to an aerial. Doesn't bother to keep it down. And handed a simple catch to Ali Malik. That brings Gully in at number 7. 2 balls, 1 boundary needed, and they are simply over the line. Mudassir Abdullah, suggestions are going on. People are trying to ease up his nerves there. There is Irfan Haq. There is Lon Nasir telling him it's your job. Do it in your style. You can do it. 2 balls, 4 needed. 2 balls, 4 to defend. Gully on strike. Sopore a 1 shot away from winning this one. Who will prevail? Who will take away 2 invaluable points? What a game of cricket. Really a nail biter. At one stage we were talking about that. Are this one gonna go down to the wire? It is absolutely down to the wire. That one pulled. There is going to be the field in place. Will just be 1. Are they gonna look for the second? And that isn't available. They need 3 from 1. What a game of cricket. This is called the real nail biter is underway between Stallions and Athwas India 11. 1 ball, 3 away.
मात्र एक गेंद बची है, 3 रन चाहिए। किसी ने कल्पना भी ना की होगी कि ये मुकाबला यहां तक आ पहुंचेगा। सोपोर स्टैलियंस को 175 बनाने थे, 172, 19.5 विकेट 5 गिरे हैं, पर यहां गेंद मात्र एक बची और 3 रन चाहिए जीत के लिए, 2 बराबरी के लिए, एक अतिरिक्त यानी कि 3 रन कुल मिलाकर जीत के लिए। अगर यहां से 2 रन तो मुकाबला सुपर ओवर में। क्या यहां पर इस प्रतियोगिता का ये दूसरा सुपर ओवर होगा? क्या यहां पे मुकाबला अथवास के पक्ष में जाएगा? क्या ये मुकाबला सोपोर स्टैलियंस के पक्ष में जाएगा? पर क्रिकेट ने एक बार फिर दर्शा दिया ये महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ सभी प्रेडिक्शन फेल है और ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। यहाँ रंग बदलने में देर नहीं लगती। 172 पे 5, 19.5, एक गेंद 3 रन चाहिए जीत के लिए, 2 बराबरी के लिए। क्या सुपर ओवर होगा? क्या यहाँ 2 रन और मिल जाएंगे? एक और सुपर ओवर, वो दूसरा सुपर ओवर होगा इस टूर्नामेंट का। और क्या यहाँ से अथवास की टीम नर्वस को कंट्रोल कर पाएगी? यहाँ रन गति पे अंकुश लगा पाएगी? शानदार, बेहतरीन, आकर्षक मुकाबला। एक गेंद 3 रन चाहिए जीत के लिए, 19.5, 172 पे 5। 1 ball, 3 needed. We are also available in Play Store nowadays. You can install the app in between. Here comes Mudassir with that final ball. 1 ball, 3 needed. Sumit Kumar is on strike. He used 10 balls for his hot fought 5. What will he do? He fought hard. Will he take his side over the line? Is he gonna come up with a special one? Will Mudassir keep him quiet? Let's see the final ball. Who will rise to the occasion? The last ball of the game. Goes and bows. Sumit hits that one onto the onside. Are they going to look for 2 here? That means we are in for a super O. Is he home? I think they're going to upstairs. Oh, look at the Athwas India 11. They are celebrating, but we'll have to wait and watch. TV umpire is asked to look into this one. Who will rise to the occasion? Sumit Kumar, he was a bit late. He's shown the laziness in going for the second run. And Athwas India 11, they are looking confident at the moment. TV umpire will look into this one. Suspense continues. Tense moment here at Bakshi Stadium. Can you believe? What a game of cricket. 20 overs from inning number 1. 20 overs from inning number 2. You need nerves of steel. Take a look again. Oh, I think he's going to be in danger here. And he's given us out. Athwas India 11 They prevail by the barest of the margins, by 1 run in the end. Congratulations to Athwas India 11. Commiserations to Sopore Stallions. They held their nerve, go on to win this one from nowhere. Back to the glory. What a win, what a victory for Athwas India 11. That's why cricket is called the game of glorious uncertainties. Once again, it proved itself right, and Sumit Kumar is heartbroken. You can see that. Gully just trying to ease up his nerves. It's agony for Sumit Kumar, and absolute ecstasy for Athwas India 11. They prevail by 1 run, and look at their faces. Parvez Rasool, all smiles, hugging, and customary handshakes are going on. These are the visuals coming your way from Bakshi Stadium. With this one, we will take you back to the studios, and we shall be back sooner this evening with game number 2 for today, and overall that's going to be match number 19 of Red Premier League. Till then, assalamu alaikum and fi amanillah.